So polity done and newspaper done. So both, any doubt you are having in the both? No? Governance, correct? So already we are aware this will come here in GS paper 2. So GS paper 2 mein first was Indian polity and constitution, correct? And second part only will come governance. So this governance is somehow attached to the polity only. And third will come social justice. Social justice, correct? So this is also linked somehow to the governance only, because first क्या होगा, you should form the government, correct? First आपको क्या है, you should form the government. That means there must be a council of minister, president, prime minister. So that will come from here only. And you should have constitution also. They are going to define the limits and authorities of those bodies, and then only they will going to work. If they work in very good manner, it will be the governance. Whenever there is governance will be there, then only you will be having a social justice. And social justice may what will you will get, like hunger, education, health, these issues. Agar this is not there, then this also will not be available. So that is the reason is this 1, 2 and 3, they are interconnected to each other. So whenever you are writing the answer in for this social justice question, keep in mind this governance also. Like example, if any question is coming regarding social justice in the sense like ki hunger, ki even though we are having a surplus food grain in India, correct? We have already running so many government schemes at the state and central both levels, but still hunger is prevailing in our country. What could be the reason? The reason क्या होगा अपने पास? Bad governance only. Some corruptions are going on. Schemes are not implementing in proper manner. There is a siphoning of the government's funds are going on. Correct or not? So then governance you need to add, and then you need to add constitution also. Like in the preamble is talking about the justice, social, economic, and political justice, and we are not able to implement those justice. And constitution is talking about the fundamental rights. Some of the rights have been given to the vulnerable sections. So जब भी आपको आंसर करना है ना, you need to keep these three in your mind always. करेक्ट है? तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि this three things they are interlinked to each other. If governance is not there, social justice is not possible. करेक्ट है? जैसे governance है, see अभी good governance day was also there. What was the date of the good governance day? कब हमने सेलिब्रेट किया गुड गवर्नेंस डे? न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ रहे हो, करेक्ट? Yesterday was good governance day. 25th December is celebrated as good governance day. Yesterday in the newspaper is also there. 25th December, Christmas day only. Correct? This good governance day we celebrate to commemorate the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. ठीक है? So this one thing also you came to know. Clear this? So today today is 26th December, correct? So we are going to start this governance orientation. So good governance. ऐसे होता है governance index also. That governance index. So this governance index कौन issue करता है? Governance index. This governance index भी आपका department of basically this grievance redressal program वाला जो ministry of, और आप लिख सकते हो this ministry of personnel और DOPT, department of personal training, जो UPSC के अंदर आता है ना, UPSC comes under this ministry only. So they issue this governance index also. We will cover that separately. Actually this is not the today's topic.
So today we are covering this governance. Governance भी एक बहुत बड़ा important है, because even though question is coming from the social justice, they also can be the part of governance. Even directly questions can come from the governance also. So definitely you can expect around 4 to 5 questions that somehow directly they link to the governance sections only. Governance देखा जाए तो governance is always a good thing only. आपने देखा होगा there is difference होता है. एक you must have covered this government, एक होता है governance, correct? दोनों में difference क्या है? What is the difference between government and the governance? Correct? So governance क्या है? Government. It is an institution. It is an institution. Correct? That means it is a building. Correct? This is a building. Building is an institution. Same where government is an institutions. अब government में कौन हो सकता है? Institution means president will be there, prime minister will be there, council of ministers also will be there, civil servants will be there. Correct? Everyone, they are the part of that institutions only. So जो institution that is called as government. Now these institutions and the peoples who are actually occupying these institutions, how they work, that is called as governance. So governance basically it is a process. It is a process, correct? जैसे for example आपके किचन में ना so many materials are available, ingredients are available. So these ingredients they क्या हैं? This is the government. But how use these ingredients and make a very good recipe, that is process is called as governance. अब same for example आपने देखा होगा, same ingredients you are using, same ingredients I am using, you are able to make a very good recipe from the same ingredient. If I use the same, I am not able to cook the same delicious recipe. That means there was a problem in my governance. In your governance there was no problems, your process was perfect. So that is called then bad governance and good governance, correct? This is bad and good governance. If they are performing well, they are following all the parameters, they are actually encouraging transparency, they are encouraging accountability, they are encouraging citizens participations, तो क्या हो जाएगा फिर? Good governance. If they hide actually this official data from the people, if they are not increasing the citizens participation, if they are involved in the corruptions, siphoning of the government funds, तब क्या हो जाएगा? Bad governance. Simple. समझ में आ गया? So government is nothing but ingredients in your kitchen, those available, and how you are going to make good recipe out of it, the process will be called as governance, correct? अब for example, अब same जैसे आपके kitchen में you are actually having ingredients, you are also there, and then you are making good recipe out of it, correct? But your mother is also there, correct? And mother is also helping now, helping in the sense they're just guiding you, okay? Or for example your siblings are there, they are guiding you in the helping to bring water, to bring some other things, correct? To bring actually curd from outside. So see, other stakeholders are also involved. तब क्या होगा? Then much more actually delicious recipe will come out, because if you are sort of any materials, there are peoples are there surrounding you, they are able to bring those materials, correct? Same यहाँ पे अगर इनकी जगह some more stakeholders comes and they help here, then it will be more good governance. अब वो other stakeholders कौन से हो सकते हैं? Market means private sector. Second, civil society organizations, correct? NGOs, if they are also helping in encouraging transparency, accountability, citizens participation, then it will be more good governance, correct or not? So in the government only one institution is involved, that is government institutions. But when it is governance is there, then this institution is also involved, this also involved, and this also involved. So stakeholders in the governance, they are more in number, correct? So for example, if we see stakeholders here is, then you will get more stakeholders now. So governance means this is governance.
करेक्ट. अब यहाँ पे स्टेट इज इन्वॉल्व. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकंड इज market, that is private sector, and civil society organizations like NGOs, self-help groups, correct, they are also involved. If all the three together, they actually help to bring out some changes in the society, to bring out social justice in the society, correct or not, it will be called as then good governance. इतना क्लियर हुआ? So difference between government and the governance. Governance वैसे तो अच्छा ही होना चाहिए. Governance per se should be good only. Correct? जैसे for example any recipe you prepare, by nature recipe should be good only, tasty only. ऐसा तो नहीं कि by nature it should be not a good taste. But because you have missed something, because of that it became now taste and bad in taste. Correct or not? So same process here is governance by nature should be good only. Governance आपका अच्छा ही होता है ना, लेकिन since some of the places में the problems were there, corruptions were there, people's participation was not there, vulnerable sections they were not properly taken care, correct, and that is the reason one new term has been given, that is bad governance. Otherwise governance by nature is always good. Clear हो गया अपना? So good governance and bad governance. Whenever you give the vote, whenever election is conducted, general elections, आप गवर्नेंस तो देखते हो ना कि in your area whether road has been properly built or not, proper maintenance has been done or not. अगर for example in your area proper roads have been built up, correct, traffic बिल्कुल smooth चल रहा है, correct, and proper whatever the government service, like you are visiting the BBMP office, municipal corporations, and you want some certificate, you are getting certificate on time only, correct, you are visiting the passport office, within time you are getting your passport office. If any issue happened like your bike has been stolen, you are visiting the police stations, they are properly taking care of you, correct, they are actually lodging the the report of that stolen vehicle. तो आप क्या उस गवर्नमेंट को वोट नहीं दोगे? फिर you will give vote actually. यही तो गवर्नेंस था आपके लिए, correct or not, when everything is running smooth. For example, if you visit an private sector office, visit a, like example, you order something on Amazon, on Flipkart or Zomato. If suppose example you are not getting in proper way, okay, the quality that you actually supposed to get, आप क्या करते हो? कस्टमर केयर नंबर को डायल कर देते हो. Or for example in Amazon, when you actually purchase something and they have given within 2 days they will give to deliver your product, but 2 days have been passed but no product has been delivered. Next step क्या होता है? आप even एक दिन का तक वेट नहीं कर रहे हो ना, and you just call. And same facility has been given to the government side also. If they have promised within 5 days you will get the certificates, any, correct, and you are not received, then next day you are calling the customer service, and then next day only thing has been delivered, then definitely you are going to vote the same government again, correct or not? That is what called as good governance. आप समझ में good governance क्या होता है? So पहली बात तो क्या है कि in our country ना people have not experienced this good governance yet. क्योंकि वो कहाँ जाते हैं? एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, व्हेन यू आर गोइंग, आप वहां पे भी हैप्पी नहीं हो. यू आर विजिटिंग द पुलिस स्टेशन, वहां पे भी हैप्पी नहीं हो. यू आर विजिटिंग बीबीएमपी, वहां पे भी हैप्पी नहीं हो. रोड पे जा रहे हो, रोड्स आर नॉट प्रॉपर्ली बिल्ट, वहां पे भी हैप्पी नहीं हो. तो बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू फील व्हाट इज मीन गुड गवर्नेंस इज. और यहाँ पे आपको जरा सा कुछ अच्छा मिल गया ना, यू स्टार्ट फीलिंग गुड बिकॉज स्टिल यू आर लिविंग विदाउट गवर्नेंस, करेक्ट और नॉट? सो दैट इज गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस. इतना क्लियर हुआ? Okay, so this is done with the governance. Now I'm going to cover syllabus actually. So syllabus में governance में what things we need to cover basically. सबसे पहले concept of good governance. What is meant by good governance is, what is governance is, how many stakeholders they are involved in this good governance, that is concept of good governance, correct? So abhi right now only we have discussed about this concept of good governance. That is also part of your own syllabus. After that
issues concerning the governance. What are the issues are there that concern the governance? Issues, for example, accountability, transparency, correct, corruption, ये issues है आपके, correct or not? Participation, citizen participation is proper, not available, correct? So these are, so the governance means Modi used to say that whenever he was Gujarat CM, he told smart governance should be there. It should be very simple, correct or not? So that is good governance. So what is issues regarding concerning the governance we require? Correct? So smart governance should be there. As for it should be very simple. लोगों को बहुत तकलीफ ना हो. Whenever they are visiting any government office, they are getting things as smooth as possible. बहुत सारे number of paper they should not fill. Like example, you are visiting an RTO office. आपको pillar to pillar जाना पड़ेगा. Without help of this middleman, you cannot get your, for example, this driving license easily. Correct? So it should be as simple as possible. That is a smart governance. Correct? And governance should be moral also, as much as possible. Moral, correct? Moral in the sense simply, if any vulnerable sections are coming, poor person is visiting the office, you need to put some extra effort to deliver the service to that person, correct? Like one old lady is visiting your office and she was saying that I am not having the food actually right now, but I am not having this ration card also to get the food from the ration shop, correct? अब आप क्या बोलोगे कि okay, you just bring first Aadhaar card and bring this copy, then I will definitely help you to provide this ration card. She is a poor lady, old lady, okay, and how she will going to do all these things? She is not having food. So first, whatever immediate requirement उसका क्या है, खाने का है ना, immediately you have to come actually from out of your office, correct, and give the food to that particular lady. Arrange at least 5 to 10 days of food to that lady, correct or not? And then arrange whatever the documents are required. That should be your responsibility, not the citizen's responsibility, because that is old. That is called as moral governance. ये नहीं है कि आप सिर्फ रूल खेल रहे हो उसके साथ ना. गवर्नमेंट में होता है ना, you show me the man, I will show you the rule, correct? कि everything, जिसको बोलते हैं sometimes they are under, okay, in iron cage. The bureaucrats, they are under iron cage. What is iron cage? In the sense, yes, surrounding by the rules only. They do not want to come outside the rules. उनको लगता है कि if they're coming outside the rules, then investigation can start. It's definitely ऐसा नहीं, you should actually break the rules, but you should come forward. Actually, you are district magistrate, you are IAS. IAS का मतलब क्या होता है? I am solver. I am going to solve the issue. But आप क्या कर रहे हो? You are saying always no. आप, for example, whenever you visiting any government office ना, तो ऑफिसर्स का सबसे पहले बिना सुने बोलता था नो, ये नहीं होगा. क्यों बोलता है? बिकॉज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड यस ही इज पावरफुल. अगर वो हर बार यस बोल दे, फॉर एग्जांपल ना, यू आर विजिटिंग द एसएचओ, यू आर विजिटिंग एसडीएम एंड ही वाज ऑलवेज सेइंग यस आई विल डू, ये हो जाएगा आपका काम. आप उसकी पावर समझोगे ही नहीं, वैल्यू नहीं समझोगे ना. जब वो 4 बार नो बोल देगा ना, तब आपको लगेगा हाँ दिस पर्सन इज पावरफुल, करेक्ट? सेम इन फैमिली ऑल्सो. जब फादर नो बोलते हैं तभी पता चलता है हाँ दिस मैन हैज पावर एक्चुअली इन फैमिली, करेक्ट और नॉट? तो यही ये लोग करते हैं. इसीलिए क्या होता है कि यू शुड नॉट से नो ऑलवेज, यू आर देयर टू सॉल्व द इशू, नॉट टू डिनाई दिस. आप मना करने के पैसे ले रहे हो, करेक्ट और नॉट? जस्ट से नो एंड यू आर गेटिंग द सैलरी फॉर इट. For that purpose you are not actually appointed there, and that was not your goal also when you are preparing for the UPSC. आपका गोल क्या था? Whatever the problems people are facing, and that people can be anything. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करने गए हो, that's it. कि आपका गोल यही लाइफ में कि I am going to help the poor only. If any rich person is visiting, if any businessman is visiting, then मैं उसका हेल्प नहीं करूंगा, वो अमीर आदमी. ऐसा तो नहीं है ना. Because even though that person is rich person, that person is running any business, you have to help that. Ease of doing business आपको करना है, because that person is creating the job, correct? उसकी वजह से ही others को मिलेगा पैसा, and because he is ease of doing business will be there, उसका revenue बढ़ेगा,
रेवेन्यू बढ़ेगा तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, करेक्ट है। इफ बहुत रेवेन्यू बढ़ गया देन क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा देन इनकम टैक्स बढ़ेगा, देन अल्टीमेटली हु इज गेटिंग बेनिफिट, गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट विल गेट द टैक्स। अगर जितना ज्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट विल गोइंग टू स्पेंड दैट मनी ऑन द पीपल ओनली, ऑन योर सैलरी ओनली, बट ये चीज मिस है। दैट इज मोरल गवर्नेंस शुड बी देयर। A for accountable, government governance should be accountable in nature, correct? Accountable का क्या है, whosoever has, like example you are a SDM, you have taken a decision, correct? Now you should be accountable also for your decision. ऐसा नहीं decision ले लिया हाथ खड़े कर दिए, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, your responsibility is always there, correct? That is accountable. So you're accountable to whom? Accountable to your supervisor, accountable to the people, accountable to the constitution, ये तो होना चाहिए ना। So that is accountable government. And R for responsive government. Responsive means whenever someone visiting for any service delivery, government should be responsive to that person. ऐसा नहीं they are not responsive at all, हमें बात ही नहीं करनी तुमसे, ऐसा नहीं है। And responsive should not be always reactionary in nature. Reactionary means whenever issue is coming, then I will work. अरे issue से पहले ही work कर लो ना, correct? Like example आपके road work नहीं है, रोड प्रॉपर्ली नहीं है मेंटेन्ड, करेक्ट, बहुत सारे गड्ढे हैं रोड पे। सो इफ एनी सिटीजन इज एक्चुअली पुटिंग ए इंफॉर्मेशन ऑन ऐप दैट इज रन बाय पीबीएमपी और सम अदर ओके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव। एक टिकट रेज कर दिया, रिक्वेस्ट नंबर रेज कर दिया, दैट पर्सन कैन अगेन ट्रैक कि मेरा जो शिकायत किया था कंप्लेन कहां तक पहुंचा है, दैट इज रिस्पॉन्सिव। एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, सो दैट गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, कंप्लीटली ओपन कि whatever the money they have spent in building the road, कितना पैसा खर्च किया है, कहाँ गया है पैसा, सब हिसाब होना चाहिए ना आपके पास, because that is your public money only, correct or not? So that is transparent government. इसी को बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। क्लियर दिस? एनी डाउट? सो दैट इज दिस अनदर टॉपिक जो आपको कवर करना है, राइट बेस्ड अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग। राइट बेस्ड अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग क्या है कि गवर्नमेंट व्हेनेवर दे मेक एनी पॉलिसीज, करेक्ट, सो ड्यूरिंग दैट दे मेक एनी पॉलिसीज, दैट पॉलिसी शुड बी राइट बेस्ड ओनली इंस्टेड ऑफ डोल बेस्ड। डोल बेस्ड क्या होता है, फ्री में आप दे रहे हो सबको, ऐसा मतलब दिए जा रहे हो। सो इसमें क्या है कि इट इज आपके ऊपर चल रहा है ना, अगर आपको देना है तो आप दे दोगे, इफ यू डू नॉट वांट टू गिव एनीथिंग देन यू विल नॉट गिव इट। तो क्या है कि जो सिटीजन्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट बेस्ड में क्या है कि दिस इज योर राइट, even though government is not ready to give you, but it is your right, they have to give. For example, right to work, mg narega. So mg narega best thing क्या यही है ना कि 100 days of work you will get, you are not dependent on anyone for it because it is your right only. Like right to food, it is your right only. Right to information, to get the information of the government, that is your right, you are not dependent on anyone. So your policy should be most of right based, not dole based, correct? Not dole based. Dole based means previous type, when mera government I will give, when my government is going to change and another government is coming, policy stop here only. Right based policy kya hoga ki whether no matter which government is there, people will get the service actually. So right based policy making, correct? Then public policy making and public policy implementation, this is also part of governance only. जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग होता है, दैट मेकिंग इट इज अ वर्क ऑफ पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। इलेक्टेड मींस मिनिस्टर्स, उनका वर्क क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग। आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में दे इंप्लीमेंट द लाइक टेलीकॉम बिल, करेक्ट, रिसेंटली फॉर एग्जांपल दिस आईपीसी हैज बीन चेंज्ड, एविडेंस एक्ट हैज बीन चेंज्ड, करेक्ट? सो दैट इज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, वो क्या है। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, implementation is work of civil servants, correct? So this also we need to cover under good governance only, public policy making and public policy implementation. Implement जब हो जाएगा ना, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप आउट करना है, फीडबैक कलेक्शंस। सो रियल टाइम फीडबैक इम्प्लीमेंट हो गया, देन वी नीड टू टेक फीडबैक फ्रॉम द पीपल ऑल्सो कि व्हाट चेंजेस वी नीड टू ब्रिंग इन दिस पॉलिसी। जब फीडबैक आ जाएगा देन अगेन वी नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन द policy so that we can get a perfect policy then. Clear?
Then how to establish a good governance? So this comes under aspects of the good governance. Clear? Any doubt till now? No? अब है ट्रांसपेरेंसी. अब ट्रांसपेरेंसी में क्या क्या आपको पढ़ना है? What things you have to cover here? Under transparency, definitely you have to cover about the RTI Act. Okay, Right to Information Act. इसके बारे में पढ़ना है, करेक्ट? इसके इश्यूज क्या हैं? That you have to cover. Challenges क्या हैं? That have to cover. Correct? इस RTI Act में some changes has been brought. Correct? उस changes से what impact happened on the transparency? That is important. Even this question already has been asked in UPSC. कि RTI में some changes have been made actually recently. ऐसा question था. Recently, some of the changes have been made in the RTI Act. What the profound impact they're having on the transparency of the governance? Correct? So this was the means question. Directly question, the current affair based only. Clear? So this is right to information. Then accountability. Accountability कौन सेटअप करता है? अब जब आरटीआई पढ़ रहे हो तो आपको क्या पढ़ना है? You have to cover this CIC also, Chief Central Information Commissioner, State Information Commissioner. अब देखो यही पार्ट किसका है आपका? पॉलिटी का. पॉलिटी में वी आर कवरिंग, आपके याद होगा स्टैच्यूटरी बॉडीज. स्टैच्यूटरी बॉडीज में वी हैव कवर्ड दिस CIC एंड SIC. सो ये भी आपको इसी में अंडर आ जाएगा आपका. करेक्ट? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर and state information commissioner. जैसे state information commissioner है, there are so many states are there. These bodies are headless bodies. वहां पे कोई भी state information commissioner ही नहीं है. Even in central level also, like total like 10 members should be there, for example. Now this body is completely around half of the posts are vacant. Correct? And even central information commission, it was a headless body also for some time. So this is a problem we are facing. We are not taking them very seriously. Even CIC, Central Information Commission, and State Information Commission, basically, they release reports also, annual report. And it has been seen around more than 10 states are there. They have not released their state at all, released their reports at all. Like Odisha, like Telangana, like Jharkhand. Correct? These states have not given a report at all from the 2019. This is 2023, correct? That means they are not very serious about the implementation of Right to Information Act. So what the issues are there? What the challenges are there? उसके बाद क्या होगा कि someone is getting any information. That information is very, in the sense, serious information that is going to actually expose the government, expose any official regarding the corruption matter. So this person जो होता है ना, एक activist, उसको धमकी देते हैं. और समटाइम्स ये तक हो जाता है कि मर्डर हो जाता है उसका, राइट आईटी एक्टिविस्ट का. दैट आल्सो वी हैव टू कवर अंडर इश्यूज ओनली एंड द चैलेंजेस. उसके बाद व्हाट द सजेशंस आर देयर, वो आपको कवर करना है. सजेशंस में यू हैव टू फॉलो द ARC रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ARC सेकंड रिपोर्ट. इसमें आपको यू विल गेट द सजेशंस. सो दैट सजेशंस आल्सो वी हैव टू फॉलो. So whenever you are reading newspaper, post newspaper, if any news that related to the RTI is there, regarding the RTI issue is there, RTI challenges are there, you have to focus. Any editorial is there, editorial may they are talking about RTI. If RTI is not a successful story now, what is the problems are going on, what government should do, you have to follow that RTI, that editorial. Correct?
it will come under transparency. Done. Okay, next is accountability. So under accountability, the thing is who are going to manage your accountability? So accountability के अंदर, for example, you are having a CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, करेक्ट. सो इसके बारे में आपको पढ़ना है. सी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सो दिस विल कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल नंबर 148 से आर्टिकल नंबर 159 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वी विल कवर दैट लेटर इन पॉलिटी ओनली. सो उसके बारे में पढ़ना है. देन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट that you have to cover. You have to cover about social audit, correct. You have to again cover issues and challenges, issues and challenges, correct. जब अकाउंटेबिलिटी आप पढ़ोगे whenever, तो अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो क्या होता है फिर, करप्शन, करेक्ट. करप्शन होगा. सी करप्शन कैसे होगा, करप्शन तभी होगा whenever there is less accountability, less transparency, then automatically there will be a corruption, correct or not. तो करप्शन होगा. करप्शन को डील कौन करेगा, सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल, लोकायुक्ता, करेक्ट. ये लोग डील करेंगे इनके बारे में. अब सी दिस पार्ट यू विल कवर इन पॉलिटी ओनली, एंड व्हाई करप्शन इज देयर दैट यू विल गोइंग टू कवर अंडर गवर्नेंस ओनली, करेक्ट. देन मेजरमेंट ऑफ करप्शंस, लाइक एग्जांपल करप्शन के लिए एक होता है परसेप्शन इंडेक्स, ओके. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा होता है परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स रन बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ये ऑर्गेनाइजेशन है. दे रिलीज द रिपोर्ट ऑफ परसेप्शन इंडेक्स. वो भी आपको पढ़ना है कि व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया इन परसेप्शन इंडेक्स. तो परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, दे जस्ट आस्क द क्वेश्चन whether you have faced corruptions or not, whether India में there is corruption is there. So India का हमेशा पोजीशन घटिया ही रहता है. रीजन क्या होता है कि हम लोग सबको लगता है करप्शन है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क टू यू कि whether there is a corruption in India, आप क्या बोलोगे, हाँ या ना. हाँ तो फिर बोल देते हैं हाँ करप्शन है. Then I ask another question, when last time you faced the corruption. आपने कभी करप्शन फेस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है करप्शन इज देयर, करेक्ट. That is how India's position has always remained bad. देखिए वो एक परसेप्शन खराब बन चुका है ना. Even though, for example, you also think there is a corruption, but you have not faced any time any corruption actually, because no one has asked any bribe to you, because you are not visiting any government office, but still you think that there is a corruption is there, correct or not? Because it is a perception. एक perception build हो गया है कि there is always a corruption in government office. और क्यों build हो गया, because it was there. Many of the time people have faced this issue, so they have actually give a mouth actually feedback to everyone कि I visited a तहसील and तहसील में वो पर्सन ने बोला कि 100 रुपीज लगेगा, then only इनकम सर्टिफिकेट देंगे. तो आपको लग गया अच्छा पैसा लेते हैं ये लोग. You are visiting for any of, like example, if you go passport office right now, passport office में hardly any corruption, hardly क्या मैं बोल रहा हूँ, zero corruption is there passport office में, correct. If you go to the passport, and passport office कौन करता है, government only. जब passport office can be corruption free, bribe free ना, then any other office can be possible or not. Example, if you right now if you apply for the passport, new passport or renewal of passport, तो क्या होता है सारा प्रोसेस ऑनलाइन है.
they will get take the fees online only like 900 rupees or 2000 rupees. You just go there, token system is there, किसी को allow नहीं है अंदर जाना, only you can go over there. Proper sitting arrangement has been put, A block, B block, C block, first A then B then C, फाइनल हो गया, come outside, correct, तुरंत मैसेज आ गया कि your file has been generated, this is the file passport, ऐसा करके. And then one call will come from the police station nearby. The person will get, you just come with this passport, some more documents and come collect your verification के लिए. You are going there, वहां पे that police person is also not able to take the bribe from you. वो पूछ नहीं पा रहा है, he want actually, but he is not able to ask because उसको लगता है कि तुमने मना कर दिया कि I will not give the bribe. He can't do anything because now it is the responsibility of the police person only कि why this verification has been denied on what ground. अब वो अपनी अपनी जिम्मेदारी क्यों ले, पहले जिम्मेदारी किसकी थी, सिटीजन की, करेक्ट और नॉट, अभी उल्टा कर दिया पुलिस पे, दैट इज दे आर नॉट. सो व्हेन दिस कैन वर्क देन अदर आल्सो कैन वर्क. अब व्हाई एक्चुअली दिस ओनली वर्किंग बट नॉट बीबीएमपी और अदर, बिकॉज़ who are the clients over there in passport office? Majority of the clients, they are poor person or rich person, well persons, well rich person, correct or not. इसमें क्या, like example, unfirm care is visiting the office and unfirm care face this issue. What this guy will do, he will going to tweet over there and he will tag the minister also, correct or not. तो माउथ पब्लिसिटी हो गया ट्विटर पे पूरा, तो हंगामा मच गया. अब गरीब आदमी बीबीएमपी में जाना, बीबीएमपी मनफूम खैर विल गो नो, और म्युनिसिपल कम वहां पे जाएगा नो, ही विल नॉट गो. तो ही डजंट नो वेदर देयर इज करप्शन इज देयर और नॉट. अ पुअर पर्सन जा रहा है, पुअर पर्सन, नो मैटर हाउ मच दे आर राइटिंग इन द ट्विटर, नो वन इज गोइंग टू, okay, they are not going to give importance of that tweet. So that is the difference, because client base is different in the Ministry of External Affairs. Clear hai? But when Ministry of External Affairs can do, other departments also can do, correct. So that is accountability. So accountability में CAG के बारे में discuss होगा, issues and challenges of the CAG, correct, whether they are able to do the audits, whether that audit is perfect or not, what are the challenges, and then corruptions, CBI, CBC, लोकपाल है, लोकता, and region of corruption क्या है, political regions, social regions भी है, correct. Political regions in the sense like example, politically आपके ऊपर pressure होता है, in the sense like आप, you are a minister, आप corruption नहीं करोगे, आप बिल्कुल गांधी जी टाइप हो, the moral person, you do not want any corruptions. But क्या होगा next time, whenever going to contest the elections, अब जो opposition वाला बंदा होगा, that person is actually spending money just like a water, correct, full you लो, आप हार जाओगे इलेक्शन, करेक्ट. अब क्या होगा कि आपको भी मनी स्पेंड करना है ना, बट यू आर नॉट हैविंग दैट इल गोटन मनी, अगेन यू कैन नॉट स्पेंड द मनी. सो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डू द करप्शन ओनली. सो दैट इज अ पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर है करप्शन करने के लिए. सोशल प्रेशर भी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी ने BMW ले लिया, आपने नहीं लिया, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, बिकॉज दैट पर्सन इज पुटिंग इंस्टाग्राम में लॉट ऑफ स्टोरीज, करेक्ट, तो उसको एक पब्लिसिटी मिल गया ना पूरे एरिया में. So because of that, you also want that things. So now you are also forced to do this. You also forced to purchase a plot. अब plot इतना महंगा होता है, land इतना महंगा होता है, so you do the corruption only. So just to maintain a superiority complex there in your neighboring areas, you are doing all these things, correct or not? So that is a social pressure. So we will cover all these things here under it, corruption. Clear? Corruption एक cultural भी है. किसी कल्चर में लॉट ऑफ करप्शन इज देयर, इन सम कल्चर देयर इज लेस करप्शन इज देयर, इन सम कल्चर में करप्शन इज एक्सेप्टेबल, इवन लाइक इन योर फैमिली इफ यू सी करप्शन इज एक्सेप्टेबल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं ना, मदर फादर पेरेंट्स, कि उस लड़के ने, रिलेटिव दूर ने ना, उन्होंने एक 2 BHK घर लिया है ना, आप भी जॉब कर रहे हो ना, करेक्ट, क्यों बता रहे हो हमको, बट दे आर जस्ट पुटिंग दिस इन योर माइंड कि नाउ यू आल्सो हैव टू डू दिस, otherwise there is no need to do all these things, correct or not. तो ये क्या हो रहा है, एक फीडिंग, ब्रेन वॉश हो रहा है आपका, ब्रेन वॉश, दैट्स इट. That was not information only, that was not their goal at all. Your parents goal was not just to give the information, correct or not, their goal was just this only, so that next time you also have to do. अब आपके पास ना अर्निंग है नहीं, you are doing government job only, आपको करना पड़ेगा कि नहीं. कल्चरल इशू, करेक्ट. कल्चर में एक्सेप्ट भी किया, लाइक एग्जांपल आपके एरिया में whoever is नेता is there, करेक्ट, और वो जा रहा है टोल पे, he was not paying any toll, आप बहुत खुश होते हो, वो गया था उसने टोल भी नहीं दिया, आप उसकी इंस्टेड ऑफ दैट
यार कितना पागल घटिया आदमी है ना, बताओ दूसरे 50 रुपए नहीं दे पाया, क्या आदमी है, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है ना। आप उसकी वाहवाही करें, यू आर जस्ट डूइंग दैट, यू आर प्रेजिंग दैट गाय कि दैट गाय इज नेवर पे द टोल, करेक्ट और नॉट? So you are praising the wrong things of that organization. That is a cultural issue. Culture mein we are doing this is we praise those guys who are doing corruptions. We are not actually that demeaning those guys. We are not accusing those guys. अरे वो देखो उसका मर्सिडीज करप्शन से लिया है ना, कोई भी नहीं बोल रहा है उसको, correct? Even he is getting more marriage invitations from various places, correct? Even though he has done everything through corruptions only. So that is the case is cultural corruptions. Clear this? Next, citizen charter. Citizen charter will come definitely regarding participations, जिसको बोल दे citizen participation के लिए है. Citizen participation, correct? Citizen charter होता क्या? Basically simple. You are visiting a restaurant. जैसे yesterday, most of the people they are visiting the restaurant. आप restaurant में जाओगे, you want to order something, correct? How will come to know what you need to order? Menu is there. Without menu आप कर सकते order? नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं whether this is available or not, correct? And whenever you are getting the menu, you are getting every information also this menu is available or not. अगर अवेलेबल तो किस टाइम से किस टाइम अवेलेबल है, 11 AM से 2 PM तक है या फुल डे अवेलेबल है, करेक्ट? एंड देन यू आर गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन एट व्हाट प्राइस दिस इज अवेलेबल. अगर आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़ा 4 स्टार वाले में 5 स्टार, देन दे विल मेंशन द कैलोरी आल्सो कि 350 कैलोरी यू विल गेट और 800 कैलोरीज यू विल गेट, एंड दे विल गोइंग टू राइट सम डिस्क्रिप्शंस आल्सो कि किस ऑयल में उन्होंने यूज किया, व्हाट वेजिटेबल्स दे आर यूजिंग, सब इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं, करेक्ट? अब सपोज एग्जांपल दैट दिस यू हैव ऑर्डर एंड दिस केम, उसमें मेंशन था यू विल गेट सम 2 टोस्ट आल्सो, बट दिस टोस्ट आर मिसिंग देयर. सो आप कंप्लेन करोगे कि नहीं कि से इन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव प्रॉमिस्ड यू विल गिव 2 टोस्ट बट 2 टोस्ट आर नॉट देयर, correct or not? Because that was quality was promised, quantity was promised, but that quality and quantity is not available here, so you are going to complain. That is what citizen charter is. Citizen charter basically क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस देयर लाइक बीबीएमपी, करेक्ट? इस बीबीएमपी ने एक प्रॉमिस किया है, बीबीएमपी हैज गिवन यू मेन्यू कार्ड कि these services are available here in this particular office, like birth certificate, death certificate or any other certificate, that promise. And then they have promised this कि you will get birth certificates if you are applying today, then within 30 days you will get death certificate, you will get within these days, correct or not? This तो एक सर्विस कौन सा हो रहा है, they have promised. Then at what time you will get, they have promised this also. And if you are not getting this within this stipulated time, then these are the numbers are there, you can complain over there, जिसको बोलते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स आर देयर. सो दैट इज व्हाट सिटीजन चार्टर इज. ऐसा नहीं कि आप हर वर्क के लिए वहां पे खड़े हो गए जाके बीबीएमपी ऑफिस में, यू वांट सम इनकम सर्टिफिकेट बट बीबीएमपी ऑफिस इज नॉट एबल टू गिव, क्योंकि वो एसडीएम देगा, आप वहां खड़े हो गए. तो वहां पे जब व्हेनेवर यू आर गोइंग उसमें लिखा हुआ है कि यू विल गेट ओनली दीस सर्विसेज आर देयर. अब आप फॉल्सली एक्यूज करें बीबीएमपी को, दे आर नॉट गिविंग इनकम सर्टिफिकेट, भाई उनके पास अवेलेबल ही नहीं, दैट इज नॉट देयर एक्चुअली जुरिसडिक्शंस, करेक्ट और नॉट? सो दैट इज व्हाट सिटीजन चार्टर इज, कि what the services citizen are actually expected to get from various government office or public office, these are mentioned in the citizen charter. So citizen charter is nothing but just the menu card, correct? So this benefit of citizen charters क्या है? Because यही benefit है, you would know what services you will get, at what time you will get, what the quality will be there of that service, what is the grievance redressal mechanism will be there, all these are mentioned. सिटीजन चार्टर इन इंडिया एक कब हुआ वो आपको पढ़ना है अंडर इन इवोल्यूशंस. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम्स आर देयर फेस्ड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर. प्रॉब्लम्स क्या होगा आपका, वही सारा प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल कि दे हैव ओवर प्रॉमिस सम थिंग्स, थोड़ा उड़ने लगे, उन्होंने सब प्रॉमिस कर दिया आई विल गिव सब, ताकि नाम हो जाए उनका कि दिस गवर्नमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग. तो आपको उतना ही प्रॉमिस करना है जितना आप डिलीवर कर सको. समटाइम्स क्या होता है, दे प्रॉमिस सो मेनी थिंग्स बट दे आर नॉट हैविंग ह्यूमन रिसोर्स आल्सो. जैसे बैंक में आपने देखा होगा, समटाइम्स बड़ा सा बैंक है, बड़े से कई सारे कियोस्क बने हुए हैं बट एम्प्लॉइज आर नॉट देयर. तो क्या फायदा है, खाली है सारे एम्प्लॉइज, करेक्ट? आपको अच्छा नहीं लगेगा इतने सारे कियोस्क क्यों बना के रखे हो ना. तो दैट इज प्रॉब्लम फेस्ड इन इम्प्लीमेंटेशन. देन स्टेप्स टू इंप्रूव द सिटीजन चार्टर्स. So what are the steps are there?
so that we can improve the citizen charters. For example, उतना ही promise करो जितना deliver कर सको. Correct. Another steps will be there. For example, citizen charter should be in vernacular language only. For example, you are providing in English, but those rural peoples, they know only local language Kannada, and you are not providing citizen Kannada or any Telugu or any other local language. Correct. So that citizen charter should be in vernacular language only, and citizen charter should be as simple as possible. आपने for example 100 पेज का दे दिया, वो पर्सन खोज ही नहीं पा रहा है डायरेक्टरी की तरह कहाँ पे सर्विस है. That should be as simple as possible in vernacular language only, in proper manner. That is problem faced in implementation and steps to improve the citizen charter. उसके बाद Indian approach to citizen charter like सेवोत्तम model. That is सेवोत्तम model. सेवोत्तम मॉडल क्या होता है? सेवा प्लस उत्तम. सेवा मीन्स सर्विस, उत्तम मीन्स एक्सीलेंस, दैट मीन्स एक्सीलेंट सर्विस. सो ये जो सिटीजन चार्टर है, दिस वी एक्चुअली वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम यूके गवर्नमेंट. यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट, नॉट उत्तराखंड. ठीक है. तो दैट गवर्नमेंट वहां में स्टार्ट हुआ था 1992 में, जब लेबर पार्टी गवर्नमेंट थी. टोनी ब्लेयर वाज द प्राइम मिनिस्टर. बिफोर दैट दिस वाज स्टार्टिंग देयर. And then we implemented when 1997 में we were having a for example conference, governors conference carried by Atal Bihari Vajpayee at that time. We started citizen charters, but we brought this Sevottam model also. Correct? That is excellent work. So what is Sevottam model is, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसमें. Correct? Sevottam model में basically क्या होगा? Citizen charter should be there. Then first क्या होगा Sevottam model में? First parameter is citizen charter should be there. सेकेंड पैरामीटर इज कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपने सिटीजन चार्टर तो बना दिया बट कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ भी नहीं. लाइक एग्जांपल, यू विजिट द रेस्टोरेंट, न्यूली ओपन रेस्टोरेंट है, उसने बोला कि आज से ओपन हो गया ना, और पूरा मतलब कई सारे रील्स बनवा दिया उसने, मार्केटिंग कर दिया, बहुत अच्छा. एवरीवन इज हैप्पी नाउ, बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड एवरीवन स्टार्ट विजिटिंग दैट रेस्टोरेंट. एंड जब आप विजिट कर रहे हो वहां पे ना, देन दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द सर्विस प्रॉपर्ली, इन द सेंस लेस नंबर ऑफ chefs are available, less numbers of waiter is available, they are not able to attend the customers properly. आप जा रहे हो, आपका डिश आ रहा है after 1 hour only, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? That means capacity building is not properly done there. So that is the case here also. Citizen charter first thing. Second आपको क्या है? You have to improve the capacity buildings. जो employees हैं, they should be skilled, they should be trained, correct? And third thing is grievance redressal mechanism. कि आपने बना दिया है ना, देन शुड बी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आल्सो. लाइक इन अमेज़न ने पूरा बताया है ना. फॉर एग्जांपल, यू ऑर्डर समथिंग ऑन अमेज़न, थिंग्स आर अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर रेट, करेक्ट, एंड देन एट दिस टाइम यू विल गेट दैट डिलीवर कि 27 दिसंबर विद टुमारो 9 AM to 5 PM, ऐसा करके वो देते हैं ना. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट, देन कस्टमर केयर नंबर इज देयर, यू कैन कंप्लेन ओवर देयर. सेम यहाँ पे है कि सिटीजन चार्टर शुड बी देयर, and second leg will be the capacity buildings, and third leg is the grievance redressal mechanism. Then it will become a Sevottam model. Clear this? Then next is Administrative Reform Commission 7-step model for citizen charter. So this is ARC report. They have given some 7 steps how we can improve the citizen charter. And then right to service. Right to service is also a right-based policy making. That few minutes ago I have discussed right-based service.
So right to service is that only कि they have promised some, like दिल्ली में they are having door to door service delivery system, right to service. जैसे you have to renew your even this driving license, आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे online only you have to order it, and आपके घर पे ही your license will going to be delivered only. Okay, same example if you want any other service from the government, आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठना है, online only have to apply, and then by post it will come to your home only. That is right to service now. तो दिस अगर ये बोलते हैं राइट टू सर्विस एक्ट हो जाएगा, देखो ये सब चीजें एक्ट नहीं है ना, बिकॉज ऑफ दैट नो लीगल बाउंडेशन ऑन देम, इफ दे आर फेल टू डिलीवर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो पेनल्टी नो पनिशमेंट, बट यही हो गया राइट टू सर्विस एक्ट, देन इट इज ए लीगल नाउ. लीगल में क्या होगा, द कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे विल बी मेड अकाउंटेबल फॉर नॉट डिलीवरिंग द सर्विस. सो उन पे एक पेनल्टी भी हो जाएगा, like 250 rupees per day you have cut from the salary, 350 rupees from per day cut from the salary. अब ये पर्सन हमेशा तैयार रहेगा कि भाई सर्विस डिलीवर करूँ, नहीं तो हर दिन अगर 250 कट हो गया 10 डेज में और कट 2500 गया बेचारे का, करेक्ट और नॉट. सो दैट इज द राइट टू सर्विस एक्ट इज आल्सो वन ऑफ द स्टेप्स, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट हैज डन, दिल्ली गवर्नमेंट हैज डन. इट शुड बी एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल फॉर ईच एंड एवरी स्टेट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. क्लियर? बट आपने खाली पीली इम्प्लीमेंट कर दिया, बट गवर्नमेंट इज नॉट हायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. अभी आपने देखो गवर्नमेंट का कट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रॉपर जो भर्ती होती है ना, दे आर नॉट रिलीजिंग. सी अपने यहाँ क्या है कि वी आर रनिंग द मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. मिनिमम गवर्नमेंट मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी लेस, गवर्नेंस शुड बी मोर. भाई इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन, वी आर ऑलरेडी मिनिमम गवर्नमेंट. If we compare number of government employees per 1 lakh population and compare this with number of employees per 1 lakh population of USA, we are nowhere compared to them. They are having more government employees. When that country, which is completely a capitalist country, that country which is completely a market oriented company, वहां पे government employees are more compared to India. That means we are already minimum only. We need to improve. Like number of IAS officer vacancies are still more than 4,000, but हम लोग नहीं भर्ती कर रहे हैं. Number of IPS vacancies are there, number of police vacancies are there, correct? अगर for example हम ये देखें कि how many number of police personnel should be there, तो around हमारे पास होना चाहिए 222 per 1 lakh population. इतना सारा पुलिस पर्सनल we should have, but अपने पास कितना है? 176. Some states may even 140 only, less than that. So जो अपना prescribed number we are having less than that even, and then we target our police. You see Scotland police is so good. See वहाँ पे number of police personnel per 1 lakh population is more compared to India. That is the reason. और उसमें भी क्या है, for example अब take the example of Mumbai. अब मुंबई में like 3 crore population is there, correct? अब 3 crore population के लिए for example they are having around 55,000 of police personnel. It may be 55 or 60, but last time I checked it was 48,000. So मैं 55 का rough idea है, 55,000 police personnel is there. Post 55 में around 25 to 27,000 police personnel they are involved for the VIP movement only. क्योंकि most of the Bollywood they are only VIPs, industrialists, businessmen, they are there only, headquarters important there only. So more than half of the police is busy to take care of this only. अब see अभी कितने लोग सारे VIP होंगे पूरे मुंबई में? It will not be more than for example 1 lakh. मैं 1 लाख भी बहुत नंबर ले लिया है ना, बट स्टिल अगर सोचो 3 करोड़ पॉपुलेशन इज स्टिल देयर, करेक्ट और नॉट? उसके टेक केयर के लिए हाउ मेनी पॉपुलेशन पुलिस इज देयर? ओनली 25,000 ओनली. अब ये 25,000 पुलिस 24 आवर्स तो वर्क नहीं करेगी ना. वन पुलिस पर्सनल कैन वर्क ओनली 8 आवर्स ओनली. अगर 8 आवर के दैट मींस 2/3 पुलिस इज ऑलवेज ऑन हॉलीडे ओनली. अब 27,000 के अगर आप 2/3 कर लो, then 18,000 पुलिस पर्सनल इज ऑलवेज ऑन हॉलीडे, करेक्ट? अब आपके पास कितना बचा? जस्ट 1/3 ओनली. अब ये 1/3 इसमें देन सो मेनी फेस्टिवल्स आर कमिंग. कभी ईद आ रहा है, कभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है, कभी ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, करेक्ट और नॉट? तो आप सोचोगे हाउ दे आर एबल टू टेक केयर देन एंटायर सिटी? नॉट पॉसिबल. अगर उस सिटी में फॉर एग्जांपल राइट नाउ इफ बॉम्ब ब्लास्ट आर नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट बिकॉज पुलिस का डेफिनेटली रोल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल कैसा इंटेलिजेंस का है कि दे आर नॉट अलाइंग इट. अवर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आर देयर. नहीं तो फॉर एग्जाम्पल कितना बड़ा काम है कि आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, एक पटाखा लेके कर सकते हो, किसी को पता तक नहीं चलेगा, करेक्ट और नॉट? इतना सारा पुलिस नहीं है ना. बट
we are safe because of definitely the intelligence officers. They are gathering the intelligent informations, reports, and because of that, if any untoward incidents need to happen, they are actually just destroying that. Correct? And even such less number of police personnel are there, less number of intelligence officers are there, and they are doing a fantastic job actually. अगर सोचो उन्हीं का नंबर डबल कर दो तो और बढ़िया काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा सा भी चूक नहीं होगा. तो दिस इज द प्रॉब्लम इज कि वी आर इनकरेजिंग मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बट वी आर ऑलरेडी इन मिनिमम गवर्नमेंट ओनली. एंड देन ओनली जब बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल बी मोर, देन ओनली वी कैन सर्व दिस राइट टू सर्विस एक्ट ऑल्सो. नहीं तो वो बेचारे क्या करेंगे. करेक्ट. आप किसी बैंक में जाओगे, जैसे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक नहीं, पीएसयू बैंक में, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज नहीं है. करेक्ट. हम लोग लॉट ऑफ मीम बनाते हैं रिगार्डिंग एसबीआई बैंक. उनका इतना क्लाइंट बेस्ड है ना, तो दे नॉट एबल टू सर्व, दे आर कमिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. अब वही आप कंपेयर करें किसके साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ. अब देखो कैसे कंपेयर होगा. अब एक बड़ी बैंक लाइक एसबीआई बैंक ले लो, एसबीआई बैंक. अब एसबीआई बैंक का जो टोटल प्रॉफिट है ना, जिस प्रॉफिट अगर देखो, then their profit is 70,000 crore rupees for example in 1 year. Correct. और वहीं पे एक रिलायंस है, रिलायंस प्रॉफिट इज आल्सो अराउंड 72 to 76,000 crore rupees. रिलायंस इज मार्केट कैप ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू एसबीआई बैंक अगर हम देखें तो. करेक्ट और नॉट. बट स्टिल प्रॉफिट देख लो, एसबीआई बैंक भी उतना ही दे रहा है ना. करेक्ट और नॉट. और जो अब एसबीआई बैंक का जो हेड कर रहा होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ एसबीआई चेयरमैन, अब एसबीआई चेयरमैन का कितना सैलरी होगा, 2 करोड़ रुपीज पर एनम. उतना भी नहीं. मैं बोल रहा हूँ सब पे पर्क्स एवरीथिंग. मुंबई में बढ़िया उनको घर मिलता है, डेफिनेटली जबरदस्त घर मिलता है उनको, अच्छा सब गाड़ी वाड़ी सब मिला, तब भी जाके टोटल 2 करोड़ रुपीज, उससे भी ज्यादा नहीं. रिलायंस चेयरमैन कंपेयर करो उनका सैलरी. सी एसबीआई बैंक चेयरमैन इज आल्सो गिविंग 70,000 crore प्रॉफिट, एंड रिलायंस चेयरमैन इज आल्सो गिविंग सेम, बट सैलरी में डिफरेंस आ गया कि नहीं. मैं तो रिलायंस छोड़ दूं, चलो रिलायंस तो बड़ा है. करेक्ट. आई एम नॉट कंपेयरिंग द रिलायंस मुकेश अंबानी. करेक्ट. कंपेयर टू एनी प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, इनका चेयरमैन और एसबीआई बैंक चेयरमैन, उनके चेयरमैन का फॉर एग्जांपल सैलरी इज गोइंग टू 10 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपीस. करेक्ट. न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में बड़ा बड़ा फोटो आता है ना. समटाइम्स दे बिकम विमेन ऑफ द लीडर ऑफ दिस, बड़ा बड़ा. और वहीं एसबीआई चेयरमैन बेचारा, he is giving much more revenue. Like example Paytm giving zero profit. Correct. और उनके चेयरमैन, they are earning lot of money. Startups, they are giving negative profit only. They are also earning more profits. But SBI chairman बेचारा 76,000 crore rupees, 70,000 crore rupees profit दे रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. So this is the problem. Because then salary will be less, then you are not going to attract good mind to that. कौन आएगा फिर? Correct. No one will come to your office. Correct or not? Because everyone want to earn more money now. Yes, हम ये भी जानते हैं गवर्नमेंट कैन नॉट डोल आउट दैट मच ऑफ सैलरी, बिकॉज गवर्नमेंट का जॉब क्या है, नॉट टू इन द बिजनेस. गवर्नमेंट जॉब इज टू सर्व द पीपल, डेफिनेटली. बट एक बैलेंस होना चाहिए ना, बिकॉज अल्टीमेटली सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द ग्रेट माइंड ऑल्सो टू द गवर्नमेंट साइड. क्लियर और नॉट? देन नेक्स्ट पार्ट इज ई गवर्नेंस. डन. अब ई गवर्नेंस क्या है बेसिकली? So e-governance may have to cover various e-governance model. Okay. So e-governance, basically we need to use the ICT in delivering the governance. So various e-governance model
we need to cover model. Like I told you examples of like passport. I told you online application is there. Online you have to pay the fees. That is e-governance. Okay, like example, you need to take the ticketing of railway, e-governance only, correct? So that is, so what is the role of e-governance in bringing the transparency and accountability? Because middlemen will not be there, correct? Like example, income tax. पहले क्या था income tax में whenever any this notice has been sent, notice एक particular person भेज रहा है officer वहां से, he is sending notice to any one particular person, फिर उसको कॉल करेगा कि मैंने नोटिस भेजा है, अगर आपको ये सही करना है, यू नीड टू विजिट द ऑफिस, आप ऑफिस में विजिट कर रहे हो, यू आर मीटिंग एट दैट इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर वो एक डील करेगा कि देखो आपको इतना टैक्स पे करना है ना, बिकॉज आपने गलत तो काम किया ही है, दैट इज रीजन यू आर गोइंग ओवर देयर, यू हैव टू पे लाइक 50 लाख रुपीज टैक्स इज पेंडिंग, तो यू हैव टू पे। तो क्या है डील? डील ये है कि यू जस्ट पे 5 लाख रुपीज टैक्स, दैट्स इट, आई विल टेक केयर ऑफ, एंड देन यू हैव टू पे 1 or 2 लाख रुपीज टू मी आल्सो, or 5 lakh rupees to me also. The 5 lakh you have to pay to the government and 5 lakh you have to pay as a bribe. Then आपका 40 lakh I will save you. आपको लग रहा है ठीक है 40 लाख है सेव हो रहा है, तो you will pay 5 lakh as a bribe. अब इसमें क्या होगा, this way lot of corruption is possible. अभी गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट has removed this मिलने वाला सारा कुछ इंटरनेट से होगा, मतलब ई गवर्नेंस टाइप होगा, ऑटोमेटिक इट विल गो टू नोटिफिकेशन, किससे मिलना इट इज आल्सो नॉट प्री डिसाइडेड, करेक्ट? किसी और से मिलोगे जाके, मीटिंग है ही नहीं ना, नो मिडिल पर्सन इज अवेलेबल, ओके, सेम वे नो फेस टू फेस मीटिंग इज देयर, तो इससे क्या होगा कि उनका जो चांसेस टू टेक द ब्राइब इज आल्सो गॉन। इससे फायदा गवर्नमेंट को भी हुआ, क्योंकि इफ यू आर कॉट, एक्चुअली इफ यू आर कॉट इन नॉट पेइंग द टैक्स प्रॉपर्ली, देन यू हैव टू पे द टैक्स नाउ। जैसे 50 लाख का पेंडिंग है तो 50 लाख आपको पे करना ही है ना, अदरवाइज क्या होता है, गवर्नमेंट वाज लॉसिंग 45 लाख और नॉट 5 lakh only government is received, 5 lakh उस पर्सन ने मिला, अगर सोचो इंस्टेड ऑफ 10 लाख जरा तो गवर्नमेंट विल गेट 10 5 मोर एक्स्ट्रा, अभी गवर्नमेंट इज लॉस्ट कंप्लीटली 45 lakh rupees बाय दिस मेथड कि नो एक्चुअली फेस टू फेस मीटिंग इज पॉसिबल, so now government will get most of the money. So that is case is e-governance, we need to cover it. Then major e-governance projects and challenges in their implementations also. कि what are the challenges in implementations are there? क्या challenges होगा? Basically digital deficit, एक ये इशू है अपने इंडिया में, डिजिटल डेफिसिट। डिजिटल डेफिसिट बेसिकली क्या है कि लॉट ऑफ रूरल एरियाज में, इवन इन अर्बन एरियाज आल्सो, नॉट रूरल एरियाज, दे आर नॉट डिजिटली वेरी स्किल्ड पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके जैसे फादर या ग्रैंडफादर, अब दे कैन नॉट यूज स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उनको तो बटन वाला मोबाइल ही सिर्फ आता है, 1 दबाना 2 दबाना, दैट्स इट ना। अब they will face problems if you do everything on online only, or everything on the e-governance model only, then lot of people are there who are not well equipped with this digital age, so they will going to face problems regarding it, right? जैसे और है, जैसे e-चौपाल, another example I give you, e-चौपाल। e-चौपाल बेसिकली क्या है कि जो फार्मर्स, किसान हैं, उनके लिए एक चौपाल मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक चौक टाइप, एवरीवन इज सिटिंग देयर, दे आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज, तो ई चौपाल मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली ऐप में बेस्ड, किसको कितना फसल बेचना है, किस रेट पे बेचना है, ऑल दीज थिंग्स आर थ्रू ई चौपाल ओनली, करेक्ट? ऑक्शनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेन प्रॉब्लम जो फार्मर्स का है, देयर इज मिडिल मैन इज देयर, सो दे आर नॉट एबल टू सेल देयर क्रॉप्स एक्चुअली एट प्रॉपर रेट। उनको क्या है कि दे नीड टू गो टू द मंडी, मंडी में ही उनको बेचना है, मंडी में दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर रेट। अभी अगर सोचो ई चौपाल जैसा हो जाए, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट दिया, ओके, लाइक एग्जांपल लाइक इलायची का ऑक्शन ही होता है, कार्डमम वगैरह होता है ना साउथ इंडिया में, तो 4 to 5 प्लेसेस में ऑक्शन सेंटर्स हैव बीन देयर, आपका पूरा फसल हो रहा है ना, तो यू विल गो ओवर देयर, तो वहां पूरा काउंटर लगा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर कई लोग बैठे होते हैं लैपटॉप ओपन करके, और उनके पास एक मतलब बाउल होता है, करेक्ट? जैसे आपकी क्रॉप्स है, आप वहां पे गए, आपने इतना सारा इलायची लिया, एंड यू आर जस्ट थ्रो एक्चुअली ऑन दैट बाउल्स ओनली, सारे ऐसा करके चले गए। अब ये क्या करेंगे, दे विल गोइंग टू फिल मोस्ट ऑफ द क्वालिटी, वो चेक करेंगे ऐसा करके देख के, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट कार्डमम, दे विल फिल व्हाट इज द कलर इज देयर, व्हाट इज द वेट ऑफ इट, वन ओके बीड का सब कुछ भर देंगे ना। बेस्ड ऑन दैट जो उधर पे जो इंटरनेट में बैठे होंगे लोग ना, दे विल ऑक्शन कि आई विल परचेज दिस वाला एट दिस पर्टिकुलर रेट,
आपका एक्शन लग गया, देन योर प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। सो ये एक अच्छा चीज है कि नहीं? सो दिस थिंग कैन बी डन फॉर अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, लाइक पोटैटो, लाइक व्हीट, लाइक राइस इजिली। सो फार्मर्स विल गेट डायरेक्टली, अब वहां पे वो फार्मर्स डायरेक्टली जा रहा है ना, तो जिसके पास फॉर एग्जाम्पल 100 kg है या 200 kg है, वो जाते हैं इतना लेके फेंक देते हैं, जाके ऑक्शन कर देते हैं वहीं पे, और इमीडिएटली विद इन एक्चुअली 5 minutes प्रोडक्ट सोल्ड एक्चुअली। So that we can do through this only e-governance model. Clear this? Next will come basically this role of civil services in a democracy. So इसमें basically civil service, first don't confuse civil service only this IAS, IPS or IFOS, no, or any civil service means everything, everything in the sense group A, group B, group C, everyone is involved, that is civil servant. Civil servant means you are, like example, your father is working as a government employee anywhere, he is also a civil servant only. जो भी देश की सेवा कर रहे हैं, they are civil servants. एक सिविल होता है, एक डिफेंस होता है, टू ही है। तो सिविल सर्विस मींस एवरीवन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ देयर इन सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी? इसमें आपको यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आल्सो, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आल्सो, करेक्ट? देन यू हैव टू कवर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द सिविल सर्वेंट, करेक्ट? रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। So a lot of things you have to cover under this civil service areas. So you have to link civil service with the democracy. Like example, election. Democracy means basically election only. A free and fair election is possible without civil servants? Not possible. So civil servants most important role in democracy यही है, to conduct the free and fair elections. इससे ज्यादा important work कोई भी नहीं है, to conduct elections. Done. अब यहाँ पे what you need to cover basically है, you have to cover here, like example, we are covering civil service. So in civil service we have to cover both actually, normal service like IAS or state ka PCS, okay, and then IPS, that is not IPS, we can call police, like normal common term police. So main problem, first we need to cover recruitment process, इसमें क्या problems है? Second is problem recruitment हो गया, then issues in training, proper training नहीं मिल रहा है। proper training किसको मिल रहा है? IPS लेवल को, डिप्टी जो SP लेवल को, बाकी जो बिलो लेवल में उनका प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं हो रहा है, जस्ट कांस्टेबल लेवल पे, तो वो नहीं है। तो ये चीज है। देन वैकेंसीज, वैकेंसीज का इशू क्या है? फॉर एग्जांपल इफ वी सी, ओके, देन मेजॉरिटी ऑफ जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एग्जांपल 1%, 13%, 86%, जो 86% जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो कौन से हैं? कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, दैट्स इट, उतने ही हैं।
उसके ऊपर जाके जो 1% कौन है, दे आर बेसिकली डिप्टी एसपी, ओके, फिर उसके बाद आईपीएस, उसके ऊपर जो भी लोग हैं वो है, इन बिटवीन दे आर 13%। आप सोचो 86% जस्ट कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल्स आर देयर, करेक्ट, 86%। तो दिस नंबर इज वेरी बिग एक्चुअली, एंड दिस नंबर इज वेरी लेस, ओनली 1% एट हायर लेवल पे, जिसको आप सुपर ऑर्डिनेट बोल सकते हो, करेक्ट। सो मेजोरिटी ऑफ द पुलिस पर्सनल जो है दे आर वेरी एट लो लेवल, और इनको ही प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है ना, प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रहा है, एंड दीज आर द पीपल्स हु हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द पीपल आल्सो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कटिंग एज लेवल। कटिंग एज, कटिंग एज बेसिकली क्या होता है, वो एज जहां पे सिविल सर्वेंट्स का इंटरेक्शन होता है विद द पीपल। अब सिविल सर्वेंट इंटरेक्शन विद द पीपल कौन करेगा, डिप्टी एसपी डायरेक्टली बात करेगा जाके, या कांस्टेबल जाएगा, कांस्टेबल जाएगा। अगर ये बंदा अच्छे से बिहेव करे ना, इवन दो दिस गाय इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, डिप्टी एफसी और एसपी or for example DGP, they are not behaving properly, but this guy is properly behaving, तो लोगों को क्या लगेगा, पुलिस अच्छा है खराब है, they think police is good because जो बात करने आया he was good, तो उसको लगेगा proper everyone is good। अगर ये कांस्टेबल is not behaving properly, उसको लगेगा बॉस ऊपर जो बैठा है ना वो भी खराब है ना, डीजीपी भी खराब, आईजीपी भी खराब, एवरीवन। सो दैट इज व्हाट इज कि कटिंग एज लेवल में those who are interacting with the people, if they are not properly trained, they are not sensitized with the issue of the people, they have no gender sensitization, even like how to behave with the women, how to behave with the child, these things are missing, then proper message will go कि ऊपर तक जितने भी whosoever there is higher level पे, they all are bad people only, correct or not? So we need to properly train them, but government is not putting effort actually in proper training of this. It is vacancies, correct, and a lot of vacancies are here and here also. And another problem we'll face, infrastructure issue. Infrastructure issue क्या है, infrastructure issue ये है कि for example those constable head constables are there, they are not properly equipped also, like whenever they are going to face any issue, how to deal with that issue, how to face, they are not having proper equipment, that means they are not having proper vehicles with them, like one police station is having just one vehicle, अगर for two different area से distraught call आ रहा है ना, then how to attend those two different calls, not possible, क्योंकि अब जीप तो एक ही है उनके पास, so proper four wheel vehicles are also not there, correct, proper communication channels are not there, telephones or system are not working in many of the police stations, various police station में we have seen in rural areas, even urban areas में आप देखना जाके proper police stations, they are not, infrastructure भी अच्छा नहीं है ना, police stations are looks too old actually, British era के लग रहे हैं, टूट जाएंगे ऐसा लगता है ना, if you go there आपको अच्छा नहीं लगेगा बैठने में ना, that is another problem we are facing, infrastructure issue, correct, proper fund is not allocated to them, these are the issues we are facing regarding this, and many of them police में क्या होता है, they are having those guns, those were used in 1962 in India China war, और उसके सामने फॉर एग्जांपल एक अपराधी आता है, he is getting very good actually pistols, कैसे पुलिस बेचारा फेस करेगा अभी, bullet proofs are not available, so that issue they are facing actually, infrastructure issue. Research and development is not happening regarding police, correct, digitization should be there police stations में ना, डिजिटाइजेशन का मतलब क्या फायदा होगा, लाइक जीरो एफआईआर, लाइक एग्जांपल एनी कहीं पे भी एनी ऑफेंस हो गया है, यू वांट टू फाइल ए केस, आप जीरो एफआईआर कर दो, आपको ये नहीं देखना है कि इन विच पुलिस स्टेशन इज देयर, तो जीरो एफआईआर करके डिजिटाइज ऐसा है कि ऑटोमेटिकली व्हाटएवर द पुलिस स्टेशन इज देयर इट विल बी एलोकेटेड देयर ओनली, ऑटोमेटिक, वो सिस्टम अभी नहीं है, करेक्ट और नॉट, सो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इशू वी आर फेसिंग इन पुलिस स्टेशंस, क्लियर है कि नहीं, सो वैकेंसीज का, ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट का सब हो गया, उसके बाद भी सम इश्यूज वी आर हैविंग, लाइक एग्जांपल परफॉर्मेंस, ओके, अप्राइजल ये प्रॉपर नहीं है, परफॉर्मेंस अप्राइजल कैसे पता लगेगा, whenever visiting any, like example you are a senior officer, you are visiting a police station, you want to know whether this police station is performing well or not, you will going to check the FIR copy, files, report, उसमें देखो कितना है, ओ इतना सारा क्राइम हो रहा है इसमें, इसका मतलब पुलिस अच्छा नहीं है, ये तो करोगे ना, क्राइम इतना सारा हो रहा है, और हम क्या करेंगे, हम कोई FIR ही नहीं लेंगे,
सो माई कंप्लीटली फाइल इज एम्प्टी ओनली। आप आओगे चेक करने, ओ यहाँ पे तो कोई क्राइम नहीं है, गलत हो गया कि नहीं? सो व्हेन आई एम नॉट फाइलिंग FIR एट ऑल, करेक्ट और नॉट, एंड देन यू विजिट जस्ट फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, यू थिंक दैट इस एरिया में देयर इज नो क्राइम, crime is there but I am not reporting it. So this is problem of performance appraisal, correct? Problems of promotions, proper promotion is not there. Those who are very near to the politicians, they are getting promotions. Those who are meritorious candidates, they are not getting any promotions, and during promotions time they need to pay bribe also. जो some of the important area जो metro cities होते हैं, they are auctioned, उनका auction होता है ना, if I made a commissioner of that particular district, then you actually say that I will pay you 10 crore rupees, 100 crore rupees this way. तो revenue based पे same for example in सब inspector based पे भी होता है कि जो important areas है जहाँ पे they have lot of opportunity to do the corruptions, तो उसमें लगाते हैं कि अगर if I made the sub inspector of that particular area, then I will pay you 5 crore rupees. अब 5 crore rupees कहाँ से लाएगा वो? He will going to do the corruption only. So this is also an issue, correct? Yes. Encouragement आप लिख सकते. Main issue actually में आप family issues. They are not getting proper time with the family. Diwali, Holi, Eid, कोई भी त्योहार हो, they are outside only. They are not able to involve with the family. जो higher level पे officers होते हैं only they are involved with the family. जो constable, head constables होते हैं they are outside in the road only. जैसे आप SP हो, जैसे IPS हो, अब देखो IPS क्या बहुत इंस्टाग्राम स्टोरी आता है, दिवाली मना रहे, होली मना रहे, सब कुछ हो रहा है ना, बट जो कॉन्स्टेबल्स देर आउटसाइड, तो इसके मेंटल स्ट्रेस आता है उनकी लाइफ में ना, करेक्ट? सो मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सो दैट आल्सो नीड टू बी टेकन केयर फॉर देम. करेक्ट? दिस इज डन. नेक्स्ट इज, ये तो इतना हो गया. देन सिविल सर्विस में रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म, ये अपना चाहिए हमको. वेरियस कमेटी रिपोर्ट, ARC recommendation, ARC recommendations. Yes, and this is actually Administrative Reform Commission. एक commission was set up. There are two commissions they were set up. One in 1960s में, जिसको बोलते हैं ARC1, another 2007 में ARC2, जिसको बोलते हैं Administrative Reform Commission. This commission has given a very big report, like 15 report, 15 reports are there. So about administration का जितना भी कुछ होगा ना idea, you will get through that only. Like even ethics आप पढ़ोगे TS पेपर 4, उसमें एक रिपोर्ट है ARC रिपोर्ट 4, ethics in governance, you will get from here only. Yes, ARC recommendations report number 4. Same मेगा citizens participations, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एवरीथिंग यू विल गेट देयर ओनली. ठीक है, दैट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. यू जस्ट नीड टू रीड द रिकमेंडेशन पार्ट. तो ये सारा पढ़ना है. उसके बाद पुलिस रिफॉर्म पढ़ना है.
Police reform is also important. पुलिस रिफॉर्म में भी कई सारी कमेटीज हैं, लाइक नेशनल पुलिस कमीशन, क्योंकि एक नेशनल जैसे एआरसी था वैसे ही पुलिस के लिए नेशनल पुलिस कमीशन था. दे हैव गिवन रिपोर्ट. मलीमत कमेटी रिपोर्ट, नेशनल पुलिस कमीशन, मलीमत कमेटी रिपोर्ट आपको पढ़ना है. रिबेरो कमेटी, और है पद्मनैया कमेटी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स इन प्रकाश सिंह केस. Supreme Court directives in Prakash Singh case. Just when 7 directives have been given to the government, 7 directives. How to do the police reform? We will cover that later. ऐसे एक और है सोली सोराबजी कमेटी. So in committee ka whenever you are getting name in the newspaper, just be focused. Actually, they are regarding the police reform. राइट. ऐसे ही क्या हुआ कि पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस कम्स अंडर स्टेट ओनली. पुलिस इज नॉट कम्स अंडर सेंटर, कम्स स्टेट. सो जो भी रिफॉर्म होगा इट विल बी डन बाय state government only. Central government has no role here. Central government only can give the directives only, can help them. If you are not able to formulate a proper law, then I will help you. ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया था जिसको बोलते हैं मॉडल पुलिस एक्ट. अदर इज मॉडल पुलिस एक्ट. दिस वाज डन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, Ministry of Home Affairs, 2006. करेक्ट. अभी आपको और भी रिफॉर्म हो गया है बेसिकली आईपीसी एंड सब में. इसमें वन हो गया, रिसेंटली ऐड हुआ है, भारतीय न्याय संहिता. दिस हैज बीन पास नाउ. भारतीय न्याय संहिता. करेक्ट. जो बेसिकली अर्लियर था आईपीसी, अर्लियर था आईपीसी. Then one more is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले था सीआरपीसी. This also has been changed. Correct. One more has been done, जिसको बोलते हैं भारतीय जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य संहिता, जो पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट. These 3 have been passed. President of India also has given assent to these 3 bills. Right. Okay. This was your news only yesterday. So President of India has given assent to these 3 criminal law bills. Recently, they are passed by the
पार्लियामेंट। तो जब प्रेसिडेंट ने दे दिया है, दैट मीन्स दे विल बी इम्प्लीमेंटेड नाउ। क्लियर दिस? सो आईपीसी को चेंज किया भारतीय न्याय संहिता ने। So just these are Hindi word, basically they are not easy actually. If you are non Hindi background से, it is not easy. even हिंदी वालों के लिए भी difficult है, okay? क्योंकि ऐसे word हिंदी में यूज नहीं होते इतना शुद्ध, okay? So भारतीय न्याय संहिता, करेक्ट? संहिता मीन्स लॉ होता है बेसिकली, न्याय मीन्स बेसिकली क्या है कि जो जस्टिस आप लिख सकते हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक मीन्स सिटीजन, सुरक्षा मीन्स सेफ्टी, संहिता means law, that is criminal procedure code. Bharatiya Saksh, Saksh means basically the evidence, and Sanhita is law only. Clear? So these three, they have been given assent by the President of India also. Recently they are passed by the Indian Parliament. They also have to cover under police reform now. ठीक है? Next is debate on lateral entry in civil service that we need to. Lateral entry basically क्या है कि अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर यूपीएससी and then you will give the exam, then you will get the training in Missouri, after that you will enter. So that is the entry है आपका वर्टिकल से, एकदम जीरो से आपका एंट्री हो रहा है, राइट? यहाँ से आपका एंट्री हो रहा है, देन यू आर जस्ट प्रमोटिंग हियर हियर हियर, और यहाँ जाके आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए जाके। दिस इज लेवल, डिफरेंट लेवल्स आर देयर, करेक्ट? आपका एंट्री यहीं से हो रहा है जीरो लेवल से, 1 2 3 4 5 ऐसा करके। एक बंदा आया डायरेक्टली यहाँ से एंट्री मार दिया एंड सीधा 4 नंबर पे चला गया, दैट मींस ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 प्रमोशन होगी, वो डायरेक्टली ऊपर से आया ना, and directly he started journey from the number 4 only, number 5 only. So he is doing entry lateral, that is called as lateral entry in civil service. So इसमें क्या है कि some of the areas, some of the posts are there, like the level of joint secretary or at the level of director. Basically on these levels, 2 levels, joint secretary आप ले लो और director. यहाँ पे 2 level पे some of the areas में जहाँ पे we require expert. So we actually opened this field also to the persons who were working in the private sector. मतलब जिसके पास at least 10 to 14 of experience हो in the private sector, they also can apply for joint secretary and department and director post. उसके बाद उनका proper interview होगा, that will be taken by the UPSC only, right? And then they will be recruited over there. अब इससे problem क्या होगा? You are coming from here. जब तक आप वहां पहुंचे already those posts are filled now. So now you will not able to get promoted, right? So आपको बुरा लगेगा कि मैं इतना मेहनत किया था, and this guy ने 14 years सर्विस वहां पे भी किया, like Google's, Microsoft, Infosys, यहाँ पे, and then he is enjoying life here also. So that is, इससे फायदा ये हुआ कि competition will increase, competition, क्योंकि आपको लगेगा कि now everything is not in your hand now. If you are not doing work, then some other person will come and he will going to take your job. तो प्राइवेट सेक्टर में तो यही होता है ना कि भाई अगर आप वर्क नहीं करे, अदर्स आर लाइन, दे विल वर्क। अब ये सेम यहाँ पे हो जाएगा। सो इट विल गोइंग टू इंक्रीज द कंपटीशंस, बट इट विल गोइंग टू डीमोटिवेट आल्सो यू। आपको बुरा लगेगा कि हम इतना मेहनत किया, आई हैव सैक्रिफाइस माय लाइफ ऑलरेडी। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, बिफोर दैट आई वाज इन्वेस्टमेंट बैंकर इन सम अदर कंट्रीज, 1 crore rupees per annum आई वाज अर्निंग, आई सैक्रिफाइस्ड दैट लाइफ एंड आई केम हियर। और यहाँ पे इस बंदे नहीं है, फिर से खाता खराब कर देखा है, नॉट दिस वे। सो लॉट ऑफ प्रो एंड कॉन्स आर अवेलेबल, सी एवरीथिंग के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर क्लास ओनली, डिबेट ऑन लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, करेक्ट? व्हाट रिलेशनशिप इज बेसिकली न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, दैट मींस सिविल सर्वेंट शुड बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता विच पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, यू हैव टू सर्व everyone, correct? ऐसा नहीं है कि you like only BJP, if Congress government came into power, अब आप उसके against हो गए हो, you are just criticizing the policies of the government every time, you are writing lot of in social media, वो सही बात नहीं है। You should be politically neutral, that is what it is. Then what relationship you are having with your political boss, because ultimately whenever you are a secretary in any government departments, correct? तो आपको boss कौन होगा? He will be the minister only. So what relationship you are having with that minister? Minister sometimes actually asks something that you think that it is illegal, it is unconstitutional. How to deal such thing also? You will cover under it only.
उसके बाद फॉर एग्जांपल है परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम इन ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि द प्रमोशन इट इज लगभग फिक्स होता है ना, कि 2 years इफ यू आर हियर, देन 3 years 5 years ऐसा करके यू गेट प्रमोटेड. सो इससे क्या हुआ, दोज हु आर वर्किंग properly efficiently, they're also getting promotions, and those who are not working properly and they are completely inefficient guy, जो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, डेली आके सबको बर्थडे विश किए जा रहे हैं ना, करेक्ट और नॉट, तो उनका भी आपने प्रमोशन कर दिया. और जो बंदा सबसे सोशल मीडिया से दूर होके बराबर जमीन पे रह के काम कर रहा है ना, ऑन द ग्राउंड, ही इज नॉट शोइंग, ही इज नॉट हैविंग एनी पीआर टीम आल्सो. आपने देखा होगा आजकल कि आजकल के लड़के क्या होते हैं, तुरंत सिलेक्शन हुआ उनके, वो अपने आप तुरंत ही नेक्स्ट डे पीआर टीम्स हायर कर लेते हैं ना, और उसके बाद देखना उनके कितने सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल पोस्ट आर कमिंग, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह छाए रहते हैं ना. आप लोग का क्या काम कर रहा है ना, तो दे आर जस्ट making a good image surround. Why they are making good image? That means some benefit they are getting, they are hiding something, either they are doing corruptions or they are inefficient. उस सबको छुपाने के लिए they are doing all these things basically. Otherwise क्या जरूरत है, आपका एम सिविल सर्विस में क्या था, टू डू द पुअर का, जो भी हो, पुअर हो अमीर हो किसी का भी हो, जस्ट टू सर्व देम. बट आप वहां क्या करेंगे, यू स्टार्ट सर्विंग योर ओन इंटरेस्ट ओनली, करेक्ट. आप रील्स बनाने लगे बड़ी बड़ी, करेक्ट. सो दिस इवन आई हैव सीन कि दे हैव हायर्ड फुल पीआर टीम ओनली, जैसे दे आर गोइंग फॉर रेड, पूरा कैमरा चल रहा है. अरे यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर. सी प्राइम मिनिस्टर का मैं समझ सकता हूँ, because prime minister, ministers, I can understand, because they should have their camera surrounding, because ultimately they should be always in public light so that public should know they are working, correct. So because next time again within 5 years they have to go for the elections, अगर उनका चेहरा ही नहीं दिख रहा है ना, तो पब्लिक को क्या लगेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी कमी नहीं करता है, करेक्ट. तो एक दिखना तो चाहिए ना कि someone is doing work, करो या ना करो वो अलग बात है, दिखना तो चाहिए ना. So that is thing is there, but civil servant you are not going for the that elections, you are a permanent executive, so why should you are doing all these things. So that is the case is there, correct. So performance appraisal होना चाहिए properly, correct. So performance appraisal system in bureaucracy. For example, I have seen one bureaucrat civil servant IAS in Uttar Pradesh. Earlier she was, I think, in Mirzapur or some other district. When she was actually going, actually, for example, उसका ट्रांसफर हुआ सम अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो जा रहे हैं पूरा बैंड बाजा बारात पूरा फूल वूल ये सब हो रहा है, तो कौन अरेंज कर रहा है ये सब. Okay, I understand you have done very good work. I am not saying that you have not done good work. You have done very good work. People are happy with your work. सब कुछ है, correct. People are happy. But even though people are happy, everything, whether everyone can come together, can arrange such things, until unless there is a particular WhatsApp group कि भैया हमारा डीएम जा रहा है तो हम लोगों को अरेंज करना है, सब लोग 10 रुपीज भेजो, 10 रुपए भेजो, हम लोग फूल खरीदेंगे, ये करेंगे. जब तक ये सब नहीं होगा ना, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट और नॉट. इंडिविजुअल्स कैन नॉट डू दिस थिंग्स, एंड दैट मींस वहां पे 100% उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई पर्सन होगा, ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, हवाबाजी और नॉट, करेक्ट और नॉट. And the lady name was Divya Mittal. She was an IAS, correct. So ultimately, I know that things. She has done good work actually. I came to know about it. Okay, she has done good work, but still she was doing all these things or not. इतना सब हंगामा हुआ. After that, what happened when she was going to be transferred to other? She was not ready for it also. उसको मजा नहीं आ रहा था, वहां पे हम नहीं जाएंगे. Then what government has done is Yogi Adityanath sent to the secretariat now, and not giving any posting till now. Correct or not? So because the thing is this, अब वहां पे लोग बोल रहे हैं कि because this happened, because the area MLA था that feel threatened कि this lady is eyeing on the elections. See, अगर आपको really elections में लड़ना है ना, just what Anna Malai has done it. Properly have to resign and come to the join politics, because ultimately politics में अच्छे लोग आने चाहिए. See, ऐसा नहीं है, because this one bad thing we are having whenever any bureaucrats, good bureaucrats, they are coming into the politics. हम बोलते देखो यही बनना था तो ये सब क्यों किया. Yes, good person should be in the politics. Anna Malai has done it. For example, there is one more IAS officer is OP Chaudhary in Chhattisgarh. Recently, he was made a cabinet minister in Chhattisgarh government from BJP. So earlier he was an IAS officer. He has done wonderful work when he was a district collector there, and he was a wonderful person, just like Anna Malai there. Correct or not? And one day he will be the CM. One day Anna Malai also can be the CM. Definitely. Correct or not? So these good persons should be in the politics. Correct or not? But you should not do politics when you are already a bureaucrat. Correct or not? So same things like in Rajasthan also same thing happened. There was one lady SDM was there.
and she was asked, come to the service, and she was eyeing for the MLA ticket from the Congress, correct? So the thing is, when actually usme Ashok Gehlot government was there in Rajasthan, and housewarming was there, and she was not allowed to any holiday. She was crying, I am going to resign because government is not allowing me to go for housewarming also. See, that was not the case. Government has done it. You were not coming because you were just wanted a point, sympathy you want to earn, so that you can get a ticket, correct or not? क्या नहीं है, everything. Politics does not mean always bad things. हम लोग बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी समटाइम्स अगर देखा हुआ कि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो हम लोग उसको नेगेटिव में लेते हैं ना. पॉलिटिक्स मींस नेगेटिव. सो पॉलिटिक्स इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. पॉलिटिक्स मींस कि कास्ट क्या है, वहां पे रिलीजन क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस क्या है, एवरीथिंग यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. बट यू शुड नॉट डू द पॉलिटिक्स. दैट मींस यू शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पीपल, correct or not? You should not appease one community over others. That should not be. That is political neutrality principle. And same performance appraisal system in bureaucracy. And then what reforms needed in India? Bureaucracy. Clear this? उसके बाद आपका आएगा done. So code of ethics and code of conduct, this thing you are going to cover in GS paper 4 also. Yes, correct. Code of ethics and code of conduct. See, we are having code of conduct, yes, this is available, but this code of ethics we are not having right now, but we should have. Actually, code of ethics we are not having. Code of conduct, basically they're nothing but do and do not guidelines. They are just a guidelines have been mentioned कि आपको ये नहीं करना है, correct? ये उन्होंने लिख दिया है, like you have not to take a gift that cost more than like 5,000 rupees, ऐसा लिख दिया है ना. So some things that you should avoid, that they have mentioned the code of conduct. So they are there. Code of conduct rules are there for the civil servants, for all India service also, but we are not having code of ethics. Ethical some values are there that everyone should follow. Everyone should actually encourage those ethical values like sympathy के बारे में, correct or not, compassion के बारे में, these things. So वो सारी चीजें नहीं है. But ARC जो report है, ARC Administrative Reform Commission second, ARC report has recommended that we should have code of ethics also, right? Because code of ethics, if it is there, then automatically code of conduct can be implemented. Sometimes you are actually having an ethical dilemma. Dilemma क्या होता है? Dilemma basically means when you are having two choices and both choices are equal weight, and then you have to choose one. For example, two like son or daughter or son, both are actually saying to the mother, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? अभी डिलेमा हो गया मदर के लिए ना, किसको बोलते हैं, इसको या उसको, सेम है ना. दैट इज कॉल्ड एज डिलेमा. सेम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सम डिलेमा लाइक कल्चरल इशू. कल्चरल क्या होता है? लाइक एग्जांपल यू आर विजिटिंग ए ट्राइबल एरिया, और ट्राइबल एरिया में कल्चर होता है व्हेनेवर समवन गेस्ट इज कमिंग टू गिव समथिंग गिफ्ट, उन्होंने फॉर एग्जांपल सम फ्रूट्स दे दिया, समथिंग दे हैव गिवन यू, आपको लग रहा है इट इज वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, आप नहीं ले रहे हो ना, तो उनको बुरा लगेगा ना कि दिस इज इन माय कल्चर, यू शुड एक्सेप्ट इट. अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट. So from where you get the solutions? You will get solution through the code of ethics only, correct? क्योंकि सही आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना, first why this person is giving them gift, whether he has applied something to me so that he want in return, यही तो होगा ना. या कोई ऐसा हो कि इसका कंपनी का समथिंग का इन्वॉल्वमेंट है विद माय डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ, इफ कुछ भी ऐसा नहीं है ना, then you can take the gift, correct or not? Like example, your friends are there and your friends is coming from Dubai or some USA and they are bringing some gift, for example like MacBook आपके लिए लेके आ गए. आप उनको पता है कि आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप नहीं खरीद पाओगे, तो उन्होंने मैकबुक दे दिया आकर। अब इसमें आपको बताया कि दिस गाय इज नॉट गोइंग टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम मी, जस्ट एज ए फ्रेंड ही हैज गिवन यू एज ए बर्थडे गिफ्ट, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर उसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व था, लाइक ही वाज वर्किंग इन इन्फोसिस, और इन्फोसिस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है, एंड यू आर वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट, एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी। अब ना वो पर्सन ने आपको मैकबुक और सब बड़ा गिफ्ट दे दिया आगे, तो इट इज अ ब्राइब नाउ, करेक्ट, बिकॉज नाउ यू विल बी फोर्स्ड। आपको खुद एक गिल्टी टाइप लगेगा, ये उसने हमको इतना सब दिया है ना, और हमने नहीं दिया कुछ भी, करेक्ट। सो दैट आंसर यू विल गेट थ्रू द कोड ऑफ ethics only, correct? So like paid news abuse by social media, a poll means it is a problem. अभी क्या वाला एग्जांपल क्या है कि they have put a ban on social sorry newspapers, editors, TV, कि जैसे ही 24 आवर्स से उससे ज्यादा हो जाता है उसके बाद you cannot do anything over there, बट सोशल मीडिया में फिर भी कैंपेनिंग चलता रहता है ना। सो दैट इज, तो अगर आप एथिकल देखो तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। Political parties should not do anything in social media also on that particular date, but they are doing it because of absence of ethics. Then model code of conducts are there. But during model code, who are implementing those model code of conduct? Civil servants only. So during that time, they should not discriminate between ruling party and opposition party. कि रूलिंग पार्टी है, उनको ये भी लगता है कि दिस पार्टी ओनली विल कम इनटू पावर, उसी में वो प्ले करने। लाइक एग्जांपल इन आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना इलेक्शंस हैपेंड ना, उस इलेक्शन में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल रूलिंग पार्टी दे लॉस्ट इलेक्शंस, बट अभी भी 2 PM ही था, 1 PM ओनली, 1 PM, अभी भी रिजल्ट वर नॉट कंप्लीट। सो रेवत रेड्डी आई थिंक जो बिकेम सीएम फ्रॉम कांग्रेस, ही लॉस्ट द इलेक्शन इवन, करेक्ट और नॉट? अभी भी काउंटिंग चल रहा था, सीट्स आर नॉट कंप्लीटली क्लियर एट 1, बट 1 PM में ये हो गया था क्लियर कि यस कांग्रेस इज विनिंग, बट 5 PM पे फाइनल होता ना। और जो उस समय डीजीपी थे वहां के तेलंगाना के, वो थोड़े मतलब इमोशनल हो गए बहुत ज्यादा ना, और तुरंत ही जाके रेवत रेड्डी से मिलिए, जाके कांग्रेचुलेशन कर दिए सब। यू शुड वेट फॉर 5 PM और नॉट, इट इज गोइंग टू सेंड द रॉन्ग सिग्नल टू ऑल दोस पुलिस पर्संस हु आर डाउन। अब क्या लगे कि नाउ वी नीड टू गो टू द सर्विस टू द कांग्रेस ओनली, और उस समय कहीं काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गया, देन दे विल गोइंग टू डू डिस्क्रिमिनेशन ओनली। कि वी अगर कहीं पे भी ऐसा प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू support the Congress only. It's हमारा ethics only, and that is what happened after 1 hour. Election Commission has removed DGP, even additional DGP remove both. But उसके बाद क्या हुआ कि after 10 days 20 days they again came into back to the service, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया था, but it was unethical or not? It was not illegal, it was not unlawful, but ethically it was incorrect. So यही होता, sometimes it is legal, but ethically it is not good. Ethically it is completely unethical things. So that also we need to know only through the code of ethics. Clear this? Then regulatory structure and governance reform.
And so functions and responsibilities of various bodies in the governance, because I told you recently, okay, this CAG is required for accountability. CBI, CBC is also accountability in the terms of corruption. CVC, NHRC, they are all required. Analysis of this autonomy in functioning, and then Lokpal and the rise of this ombudsman era, a critical evolutions of the journey traveled so far. Lokpal in the sense of last 8th attempt have been happened regarding the Lokpal, but it was failed. But after this Anna Hazare movement, only after this Lokpal bill passed. Okay, but state and operational effectiveness of the local governments in India, then corporate governance in India, why is it so critical? This corporate governance you will going to cover in GS paper 4 also. जैसे स्टेट के लिए गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट के लिए भी तो गवर्नेंस होना चाहिए ना, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वी कैन से. व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इन द सेंस सो मेनी स्टेक होल्डर्स आर देयर, like example promoters are there, companies promoters, founders, and those retail stakeholders. Like example, if any IPO has been launched, if company is listed, if something they are doing, they should actually publicize this so that every stakeholder should know whatever going on. Otherwise only promoters and founders, they are aware about the situations, correct? Or जो retail investors है, they do not do anything, ultimately they will lose their money. एग्जाम्पल समथिंग बिग अच्छा हो रहा है, कंपनी ने बताया नहीं किसी को और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग कर दिया. लाइक एग्जाम्पल सम बिग न्यूज इज हैपनिंग, लाइक एग्जाम्पल एनी कोई लाइक इन्फोसिस इज देयर. इन्फोसिस में क्या हुआ कि सम बिग प्रोजेक्ट दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक एग्जाम्पल 10,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इज गिविंग टू देम. अब ये इन्फॉर्मेशन प्रमोटर्स को पता चल गई, करेक्ट? अब प्रमोटर्स ने क्या किया, मार्केट से ना दे हैव परचेज्ड अ शेयर. ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने अच्छा खासा शेयर खरीद लिया क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी बाहर ना, then what will happen is their share price will going to increase, ultimately they will get the benefit. इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का, करेक्ट? रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ पता ही नहीं है. तो एवरीवन एक्चुअली, इसीलिए उसके पास होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है कि कंपनी की तरफ से जो लोग होते हैं, दे आर आल्सो देयर. देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर आल्सो देयर. सो रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, दोज हु आर आउटसाइडर्स, बेसिकली दोज इन्वेस्टर्स whose stake is very less, very minimal. Like example, कि आपके पास एक भी शेयर है किसी कंपनी का ना, then you are also the owner of that company, but आपकी बात वहां कौन रखेगा? It will be the independent director only. So that is the thing. Like example, anything has happened. Like example, any hacking happened regarding, like recently there was one company, SCL Technology. Okay, some cyber bug happened regarding that company. उन्होंने तुरंत ही सेबी को बता दिया कि yes, some of the systems have been actually hacked because of some cyber hack issues. So they have given this information to the, अब क्या वो पब्लिक को पता चल गया, करेक्ट? और पब्लिक को हाँ इतना बड़ा मेजर इशू नहीं था, but they told this thing or not, so that every investor, whether it is small or big, they should know entire information. अगर नहीं है तो सत्यम जैसा केस हुआ था ना, सत्यम, तो सत्यम एक बिग कंपनी था, जो अभी टेक महिंद्रा जो बड़ा कंपनी हो गया, सत्यम was also very big company, but they were doing lot of financial irregularities and they were not informing the public. और वो deliberately they were increasing the share price of their own companies. Retail investor को लग रहा था हाँ this company is working fine, but they were financially देखा जाए, so they were not providing a proper balance sheets. So this should not be there. उसको बोलते हैं corporate governance. So this is a part of not your GS paper 2 syllabus, basically it will come your GS paper 4 syllabus, corporate governance. But since governance we are covering over there, some portions we will cover under governance also. Because ethics में then it will be easy. Ethics में then we are going to link it with the ethical governance, correct? क्योंकि जहां पे भी लॉ साइलेंट है वहां पे कौन आपकी हेल्प करेगा? एथिक्स ओनली, योर कंसाइंस ओनली, करेक्ट? अगर जहां पे फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कुछ चीजें एथिकल हैं बट दे आर इलीगल, तो वहां पे चीजें क्लियर फिर भी है, बिकॉज वी नीड टू फॉलो द लॉ ओनली, अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड. तो वहां पे चीजें क्लियर है. जहां पे चीजें क्लियर नहीं है, वहां पे एथिकल डिलेमा इज देयर, लॉ इज आल्सो साइलेंट, वहां पे एथिक्स विल गोइंग टू हेल्प यू. This regulatory structure and governance reform I already told you. Police reforms, curve on VIP culture, prison reforms in India, and then improving governance in public sector.
Done. Next is this self-help group. Okay, role of basically self-help group. Self-help group basically क्या होता है? They are the individuals who belong to the same socio-economic conditions, like same society, same economic, rural background. These women, they are coming together and they are actually saving some money like 100 rupees per month. Together they are going to make a big corpus. Now if one woman want any money, then out of that corpus that women will going to borrow some money, and after some month or day that women will going to return the money with interest charges. Correct? That is self-help group. And then shortcomings and recommendations to improve the self-help group. Shortcomings kya hoga? Basically issues and challenges like skilled. These women are rural women. They are not that educated women. They not aware about how to keep the book also, bookkeeping issues. For example, to maintain balance sheets, they are not aware about it. Correct? And if they made a big corpus, like example, already unke account mein, there are around 10 lakh rupees are there. They do not know what to do with this 10 lakh rupees. Just simply sitting on that 10 lakh rupees. Otherwise, if some NGO or civil society organization is there, if they're helping this self-help group, if this 10 lakh rupees, if you're investing 5 lakh rupees in setting one small factory, छोटा सा कुछ भी काम करने के लिए ना, then again you will going to get some job, you will get the money. Someone should be there na. Again, someone should not be there, then ultimately they will fail over there. So that is the issue they are having. Then role and functions of NGOs in this development. That is the role an NGO they are having. Then challenges faced by NGOs in India also. Challenges क्या NGO के पास में है कि some areas में बहुत सारे NGOs हैं. Like example, if we see the NGO, so we are having more number of NGOs than even population. अपने पास उतने लोग नहीं, इतने NGO है. So that is problem. One more, NGO is more in rural, urban areas than rural areas. और somewhere NGOs are more in that areas जहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है. यहाँ पे rural गरीब इंसान है, NGOs are not there. So challenges faced by NGOs. Then issues of fund mismanagement in the NGO. Sometimes जो NGO को head करता है, those who are running the NGO, they are getting very high salary from that funding only. Done. इससे जुड़ा एक और टॉपिक होगा, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट प्रोसेस. बेसिक डेवलपमेंट प्रोसेस सिंपली है सोशल सर्विस. बेसिकली डेवलपमेंट नॉट इंडस्ट्री, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है. डेवलपमेंट प्रोसेस सिंपली मींस एनजीओ वाला वर्क, सिविल सोसाइटी वाला वर्क. दैट्स सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर गोइंग टू लेंड द मनी. ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. सो डायरेक्टली बैंक से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, so there is micro finance institutions are there. They lend money to the people, but they lend at very high interest rates. For example, 20 to 24% per annum. Reason is that they are also getting at very high interest rate like 8 to 9%. So ultimately they have to earn something. That is micro, like Bandhan Bank. Right now Bandhan Bank we are having, earlier institutions, अभी इतना बड़ा बन गया है कि it became a bank even. ठीक है. So in development process का क्या लाभ है? Then issue related to the microfinance institutions and recommendations. Issue क्या होगा? They are lending at very high interest rates. Recovery इनका बहुत पैसा वाला है, मतलब in the sense एक in जो लोग होते हैं, जो rural peoples, they face issues regarding if they are not able to pay the money, then definitely torture type का उनके लिए हो जाता है ना. That is extortion policies they use. Another problem is microfinance institution का है कि they are not getting fund also at very less interest rates.
तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को some provisions need to be done like through NABARD, so that they can get at very less interest rates, so that they can lend the money to the people easily. So that is issues related to the microfinance institutions. Then role of foreign aid in the development, sometimes foreign aid. उसके बाद है the role and function of the pressure groups in India. Pressure groups क्या होते हैं? Basically like farmer pressure groups, okay, economy, जैसे industrial pressure groups are there, so they do a lobbying with the governments for their own interest. So that is pressure groups. Like example, Kisan unions are there, trade unions are there, they are pressure groups. Bank unions are there, pressure groups. कि हमारे जो bank unions, they are pressing the government कि we should have actually only 5 days work instead of 6 days work, correct or not? So even Nirmala Sitharaman has given this to the Lok Sabha recently. Yes, they are asking for this. It is nothing but a pressure. They are lobbying for it. उसके बाद changing pattern of pressure groups politics in India. And this is all about your governance topics or syllabus that we have discussed here. I have not discussed social justice part because that is different compared to this. Regarding the sources, means from where you can get the sources, there is no book is available for the governance. This one Lakshmikant book is there, but it is more about government part instead of governance part. So that is the reason is I actually advise you or don't purchase any book for the governance. You already will get from the institute, okay, one booklet of the governance, and that booklet is more than enough. And rest of the things we are going to cover in the class, that is also more than enough. Rest of the things we will collect from the current affair portions only. If you are already going through this syllabus, micro topics, then definitely you will get a lot of content from the current affair only. Correct? Around 20 to 30% content you can get easily from the current affair part daily basis. Rest you will get the booklet. Otherwise, if any book is available in the market or an online platform, I just will tell you they are of no use actually. Books, I am not saying that these books are not good, but they're not useful at all. Correct or not? Current institution book is more than enough, and then current notes whenever we are going to take the classes, that is more than enough, and rest is current affairs. उसके अलावा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, because if you start reading 3 to 4 books from the online platforms about only governance part, definitely you are going to miss some other portions. Then आपका हिस्ट्री का नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने कम हो जाएगा, ऐसे का कम हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम हो जाएगा. These things will happen, and this is completely for the mains part only, not for the prelims oriented. This completely means prelims में नहीं आएगा ना, तो आपको उतना ही फोकस करना है कि 4-5 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सको. उसके लिए मैंने बताया ना कि गवर्नेंस को यू हैव टू लिंक समहाउ विद द सोशल जस्टिस एंड विद पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट. इफ यू आर एबल टू लिंक दिस properly in better way, you will get more marks definitely. Clear? Any doubt? No. So these classes, they were definitely required for you, because now अगर ये नहीं classes होता ना, आप directly पढ़ने लगोगे ना, then current affair आपका zero हो जाएगा, because you will not able to understand the newspaper easily. इससे आपको एक idea लग जाएगा. For example, अगर any part is coming in the news में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे पुट बैन ऑन सम एनजीओस, दे आर टेकिंग एड फ्रॉम द फॉरेन, आपको आइडिया लगेगा हाँ ये तो हमारे सिलेबस में है, आप तुरंत उस पर फोकस करोगे ना. करेक्ट और नॉट? इसीलिए दिस माइक्रो टॉपिक्स इंट्रोडक्शन क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट टेक यूज दिस की इनका कोई यूज नहीं है ना, यही सब यूज है. बिकॉज समटाइम्स आप, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन स्टूडेंट,
they complain that UPSC has asked question that was not in the syllabus. आपने syllabus सही से नहीं पढ़े, that was your problem. UPSC का तो syllabus में ही था, ठीक है. अगर आप questions भी देखो ना, so they will come from the syllabus only. They are not coming from out of syllabus basically. If some questions, if you go through, like example, how many questions they are asking? See questions 2013 से लेके आप 2020 तक, some year 2 years question, but the 6, 3, 5, 4 questions they are coming most of the year. Correct? अगर आप questions भी देखो, for example, if you see the questions, तो questions भी you will see they are directly questions, they are coming from the, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें. Correct? So for example, if you see this questions, like example, in view Parliament has to ensure accountability of the executive here. So I told you linked with the directly the polity only. Even for example, can civil society and NGO organizations present an alternative model of public service delivery to the benefit of the common citizens? Discuss the challenges of this alternative method. This means whether we can replace NGO completely with the government. Government हटा दो, सिर्फ NGO रहे. We cannot replace. तो elections कौन करवाएगा, law and order कौन देखेगा, justice कौन देखेगा, judiciary वाला, that is a part of government only. And NGO cannot have that much of fund also. Finance will come from the government only. So that is the cases like this question. For example, next question if we see, so like example this, institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, just reforms in the civil service for strengthening democracy. The role of civil service and democracy. अभी क्या है कि such in this context means institutional quality. Institutional quality means जो भी government आपकी है उसकी quality, service delivery system is a crucial driver of economic performance. क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं है ना, then ease of doing business will not be there. Cost of doing business will be more. If cost of doing business will be more, then cost of product will be more. Inflation will be there. Poor people they are going to suffer more. Then government, then जो companies होगी, revenue will reduce. Then GST collection will reduce. Income tax will reduce. Link हो गया कि नहीं? अब then in this context just reforms in civil service for strengthening democracy. अगर ये सब अच्छा होगा then civil service को कैसे reform करना है? Strengthen democracy. Strengthen democracy means we need to increase the trust in the government. Trust कैसे increase होगा? If we are able to deliver the government service properly, then only trust बढ़ेगा. Then only democracy में भी trust बढ़ेगा. People will going to involve in the elections also. कितना easy था ये question? कोई difficult नहीं था आपका. Correct? Easily we can answer this. Emergencies of this fourth industrial revolution, that is digital era. Correct? Has initiated e-governance as an integral part of government. See, उसमें ये नहीं लिखा है कि they are going to replace old method. It's just integral part of. Just discuss. To discuss about e-governance, discuss about fourth industrial revolutions, discuss about e-governance and how it is integral part of the government by giving various examples. कोई difficult नहीं था, correct or not? तो next आपका question for example आप देखो. Implementation of information and ICT based projects or programs usually suffers in terms of certain vital factors. Certain vital factors क्या हो सकते हैं? Digital divide is there, correct or not? Communications are not there, proper infrastructure is not available, proper internet facility is not available. वो सब चीजें. Identify these factors and suggest measures for the effective implementation. Easy था. What are the methods used by farmers organization? It is nothing but pressure groups only to influence policy makers in India, and how effective are these methods? Farmers protest पर going on, उसी पे क्वेश्चन था ये, ठीक है. For example, if you performance of welfare schemes are implemented for vulnerable sections is not so effective due to the absence of their awareness and active involvement of all stages of the policy process. Citizen participation is not there. We are not asking the people what they want. Without asking, we are giving them. Then we prepare the policy. We are not asking them what policies are required. We are not making who are the beneficiaries of that policies. अगर सब कुछ बना दिया, then we are not investing the money on basically increasing the awareness. That means in advertisement of that policies, correct or not? So that is issue. Because for example, there are lot of policies are the lot of programs are there जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि as government is running this scheme also. Like Sukanya Samriddhi scheme, very good scheme is there.
जिसके यहाँ गर्ल्स होता है, गवर्नमेंट विल गिव 7.6 to 8% ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है ना, उसमें आपको फॉर एग्जांपल अप टू 1 लाख 1.5 लाख रुपीज यू कैन इन्वेस्ट फॉर द चाइल्ड. जब वो चाइल्ड 18 ईयर्स का हो जाएगा देन दैट पॉलिसी विल गोइंग टू मैच्योर. जो उस समय क्या होगा कि 18 के बाद 18 के टाइम पे इफ एनी मैरिज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इफ हायर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, यू गेट द मनी और नॉट. बट ये स्कीम का क्या अवेयरनेस ही नहीं किया गया. और कम से कम पैसा आप जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि 1.5 लाख, 1.5 इन एंटायर ईयर. आप छोटा सा छोटा स्मॉल अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट देयर. पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो, किसी बैंक से कर सकते हो, बट अवेयरनेस इज नॉट देयर. सो दिस इज स्कीम. सो ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, यू हैव टू गिव एग्जांपल्स आल्सो. तो वो जैसे अभी हमने एग्जांपल्स दिया ना, एग्जांपल्स हो गए, देन एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड इजीली कि व्हाट क्वेश्चन वाज, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू आर एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स आल्सो. क्लियर दिस? फॉर एग्जांपल्स नेक्स्ट में like example, this e-governance is not the only about utilization of the power of the new technology, but also much about the critical importance of the use value of the information. That means like right to information is there. I have given you this in chodo abhi right hai. I am taking the classes, correct? You are making the notes. अब इस नोट्स की क्या वैल्यू है if you are not able to use this properly in the exam. एग्जाम में क्वेश्चन आया, you are not able to use the any content from the notes क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं थी. That is what it is about it. कि ई गवर्नेंस है, yes information is available but use value is very less. People are not able to use the information, they are not implementing that report. Like right to information say, if you get the information कि government has spent that much of crore rupees for the building of this road and आपको लगता है कि this is very मतलब too much money they have spent over there and quality of the road is also not good. That means there is some corruption is there. अगर कोई accountability नहीं है यहाँ पे, that means with that information we are going, we are filing a case, correct or not? अगर ऐसा कुछ नहीं है then what is the use of that information? This is what this question is all about, correct? For example, next आप देख लो, like example this, to ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs, the identification of beneficiary segment is to be synchronized with the anticipated outcomes examined. Policy making पे है ये, hunger के issue पे, so that we will cover in social justice only. Like 2015 में क्वेश्चन आया होगा, self help group bank linkage program, correct, which is India's own innovations, has proved to be one of the most effective poverty alleviations and women empowerment program. Elucidate means क्या होता है? Elucidate means easy करना, उसको easily explain करना. So what is self help group? I told you. Then you have to link with the bank. बैंक से link मतलब नाबार्ड बैंक से you have link. इससे फायदा क्या होगा? बैंक will get to know about this कि आपको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रन कर रहा है इसमें 10 लाख रुपीज है, यू आर डूइंग वेरी वेल, आपका बुक कीपिंग भी बहुत अच्छा है. अब बैंक क्या बोलेगा, ठीक है आई आल्सो विल गिव यू 10 लाख रुपीज एज ए लोन, क्योंकि आपका बैंक आपका जो स्कोर है बहुत बढ़िया है ना. तो 10 लाख आपके पास हुआ, 10 लाख में बैंक हैज गिवन 20 लाख हो गया. अब विद दिस 20 लाख यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. अब ये बैंक ने पैसा दिया है ना, बैंक विल गोइंग टू कॉल वन एनजीओ आल्सो. एनजीओ से बोलेगा सपोर्ट दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप टू इम्प्लीमेंट सम फैक्ट्री सम वर्क. आप वो वर्क इम्प्लीमेंट कर दोगे, उससे क्या होगा कि जो विमेंस होगी ना, विमेंस दे विल गेट जॉब और नॉट, फिर से और पैसा उनके जगह आएगा ना, पावर्टी एलिवेशन होगा कि नहीं होगा. अब वुमेन के हाथ में जॉब मिल गया, वुमेन के हाथ में पैसा हो गया ना, तो घर में फॉर एग्जांपल जो मेन होते हैं ना, दे नीड सम मनी, दे आर आल्सो रनिंग सम वर्क. अब उनको सी गांव में जो लोग होते हैं मेन, उनको कितना पैसा चाहिए, 10,000 20,000 इमीडिएटली, दैट्स इट. लाइक गाय खरीदना है या कोई काम करना है, साइकिल लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, दैट इज द वर्क इज देयर. और उसमें 20,000 रुपीज दे नीड, दे विल आस्क टू हुम, वाइफ ओनली, करेक्ट और नॉट. अब डिसीजन मेकर कौन हो गया घर में, वाइफ हो गया. दैट इज व्हाट विमेन एम्पावरमेंट. यही तो लिखना था, क्लियर है कि नहीं. सो क्वेश्चंस विल नॉट बी एज डिफिकल्ट एज यू थिंक, राइट. अभी वट एवर द क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड, यू ऑलरेडी नो द आंसर, आपको आंसर पता है, बट क्या है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज, यूज वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर. सो वंस वी आर गोइंग टू रन द क्लासेस देन वी विल कम टू नो अबाउट इट. क्लियर? सो एनी डाउट टिल नाउ? So are you able to understand the syllabus as well as questions both? ठीक है.
Okay, that's it for today. Sir, one doubt. Yes. Sir, when will we get to know the book list of all the subjects? Book list of all subjects. Okay, I think class has not been taken for that book list. Now, so one class will be taken care of that book list also. Okay. 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 Thank you.